Science-Society-Setu for Atma Nirbhar Bharat. On behalf of C Division of Department of Science and Technology, Government of India, and all other knowledge partners of this initiative, I extend a warm welcome to all the esteemed speakers, panelists, guests, delegates, and participants across various virtual platforms. Welcome to the day 6 of the Web Clinic series. Today's focal theme of deliberation is STI for society, allied sectors of agriculture, in which we will be talking about harnessing solution-centric STI in search of social, economical, and environmentally viable technologies in the allied sectors of agriculture. The deliberations on this focal theme for allied sectors of agriculture has been scheduled for 2 days. The deliberations are broadly from horticulture, fisheries, aquaculture, poultry, animal husbandry, and any other allied sectors. Yesterday, the discussions were from the solution providers, and in today's session, we will have presentations from the NGOs. The Web Clinic series will help us to identify the issues and challenges, the possible collaborations and future engagement among the knowledge institutions, NGOs, and how can we scale up the technologies and the solutions for the community with large-scale delivery. Since its launch on 15th October 2020, we have taken up the agriculture and allied sector as the first sector for deliberations in this Web Clinic series. And we have organized for past 3 weeks, and today is the last session for discussion in this sector, and we'll be discussing about the allied sectors in agriculture. The Web Clinic series is being hosted, implemented, and managed by India Science, Technology, and Innovation Portal, which is called ISTI. The portal is a centralized one-stop repository or system for scientific research activities with a vision of providing a single window source of information about science in India. The Web Clinic is being telecast live on Vigyan Prasar YouTube and ISTI Facebook. I welcome Dr. Debapriya Datta, advisor and head C division, and invite him to set the context and share the thought process behind this whole initiative and what is the entire plan for executing this Web Clinic series. Today's session will be moderated by Dr. Datta and Shri Rahul Nair of Agni, an initiative of the Office of Principal Advisor, Government of India. Thank you all for joining in. Over to Dr. Debapriya Datta for his opening remarks. Thank you, Dr. Kinkini, and good afternoon, namaskar, namaste to all of you. I think this is the third week of our Science-Society-Setu for Atma Nirbhar Bharat, this web clinic. We thought, to give it a name of web clinic, so that हम खाली इसमें एक ही साइड का विचार हम व्यक्त ना करें और हम ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पे डेवलप करें कि जिसमें नॉलेज और सॉल्यूशंस दोनों को एक ही जगह ले आ सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स और टेक्नोलॉजी यूजर्स को हम एक प्लेटफॉर्म में ले आ सकते हैं। और इसी उम्मीदों से हमने ये शुरू किया है। हमें कल जो हमारे जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के पहला दिन था, जो जिसमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस जो नए टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री, मीट प्रिजर्वेशंस, एरी कल्चर, एक्वाकल्चर के ऊपर बताए, और उसके रिस्पॉन्स में काफी सारे इंटरेस्ट जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने दिखाया है। और ये तो सेतु का साइड है। अब आत्मनिर्भरता के ओर आप देखेंगे जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत ये जो स्कीम शुरू हुआ है, इसमें अलाइड सेक्टर पे जिस मुद्दे पे जोर दिया गया है वो है जो फिशरीज में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जहां 11,000 करोड़ डिफरेंट मेरीन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के ऊपर दिया गया है और एलोकेट किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन,
कल आपने इसका कुछ जो मुद्दे हैं, कुछ जो अंश है आपने सुना है। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 15,000 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर, नए जो टेक्नोलॉजी की इन्फ्यूशन उसके ऊपर जोर दिया गया है। और कानपा फंड जो ट्राइबल एफॉरेस्टेशन कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, जो कि फैसिलिटेट जॉब क्रिएशंस फॉर द ट्राइबल्स एंड आदिवासी किया गया है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर पार्ट है, जो बहुत हम इसमें डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये हमारे बैडर में है। तो कल हमने जो देखा था कि जो ये जो वेब क्लिनिक है, इसमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस ने कम्युनिटी और एनजीओस को जो नया और इमर्जिंग नॉलेज टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, और बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया। और अब आपको ये सब पता है, इसलिए मैं इसी के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थीमेटिक एरियाज भी आपको पता है कि ये 8 वीक तक चलेगा। ये हमारे तीसरे वीक है, जिसमें एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स की हम ये जो सोशली रेलेवेंट एसटीआई और जो साइंस टेक्नोलॉजी और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की जो बात है वो करेंगे। और आज के दिन जो जो एनजीओज एंड सम ऑफ द the startups, they are here, that they will be discussing कि खाली टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, इनकी जो कम्युनिटी के साथ काम करने का जो अनुभव है, और उसी एक्सपीरियंस से कैसे उन्होंने कम्युनिटी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाया है, उसमें क्या चैलेंज है, सिस्टम में क्या गैप है, इसके ऊपर हमें उम्मीद है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो जो फील्ड लेवल पे जो फिशरीज, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें क्या नए और नवाचार कैसे लाया जा सकता है, कैसे जो नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच जो सिस्टमिक गैप है, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और इससे हमें उम्मीद है कि जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटीज है, उनको हम मोटिवेट कर पाएंगे कि ये जो हमारे फील्ड लेवल की ये जो जरूरत है, इसके मुताबिक हमारे जो नॉलेज डेवलपमेंट को इसको अलाइन करने का साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर भारत सरकार की हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी है, उसके मुताबिक ज्यादातर साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। ये इसके लिए हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है, जो एसक्यू फॉर एएनबी, इसकी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हमने पहले भी बताया। हमें उम्मीद है कि इसी के थ्रू हम एक डायनामिक सिस्टम के जरिए, जहां रिक्वायरमेंट की मुताबिक जो जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम डेवलप हो सकता है, उससे उसी उम्मीद में हम इसी को चला रहे हैं। और कुछ हद तक हमने कल इसी का जो इंटरेस्ट दोनों साइड से हमने देखा है। तो ऐसे हम हर जो हर कैप्चर चरण जो खत्म होगा, उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करेंगे। ये आपके साथ पहले भी हमने शेयर किया हुआ है कि जो सोशली रेलेवेंट एसटीआई से जो एनजीओ और जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव और जो हमारे स्टार्टअप्स, ये जो जो रिक्वायरमेंट्स दे रहे, जो सिस्टमिक गैप की बात कर रहे हैं, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।
जो कि हमारे जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और कम्युनिटीज के जो कोलैबोरेशन से नए जो टेक्नोलॉजी जैसे technologies, the thermoplasm, breed conservation, advanced prepared like zoonosis, disease diagnostics technologies को आगे कम्युनिटी तक लिया जा सकता है। फिशरीज में बहुत सारे नए जो आइडियाज, नए जो टेक्नोलॉजीज के बारे में कल हमने सुना है, जैसे RS सिस्टम फॉर कल्चरिंग, climate resilient, the carp culture, carp fingerling productions, integrated fish farming, पोल्ट्री के ऊपर डायग्नोस्टिक किट्स और वैक्सीनेशन के ऊपर हमने सुना है कि अभी भी देश में पोल्ट्री वैक्सीनेशन पे कोई पॉलिसी नहीं है, जो कि बहुत ही जरूरत है। और जरूरत है कि ये जो वैक्सीनेशन हम और ज्यादा फैला सकते हैं। और मीट प्रिजर्वेशन के ऊपर हम एक अनोखा टेक्नोलॉजी जो कि रिटोर्ट पाउच प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है। ऐसे ही सेल्फ वर्म रियरिंग टेक्नोलॉजी जो कि नॉर्थ ईस्ट की एक इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जिसके अपॉर्चुनिटी है दूसरी जगह जहां सिल्क वर्म की रियरिंग होती है वो ले जाने का। तो ये सब अपॉर्चुनिटी हमने कल देखा है। और हमने देखा कि जो कोलैबोरेशंस, ऑलरेडी एक कोलैबोरेशंस जो आईसीआर के सीफा और एक जो ओडिशा बेस्ड एनजीओज ने बताया कि जो फिंगरलिंग प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इस पे नेटवर्क प्रोजेक्ट की तौर दिया जा सकता है। एनआईटी पुदुचेरी ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ आईओटी बेस्ड वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट किया है, ये हमारे जो कोर सपोर्ट ग्रुप्स की दो कोर सपोर्ट ग्रुप्स they have shown interest to take it forward to the field. Similarly, बात हुआ है कि जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो करते हैं, ये हमारे जो नए लाइन डिपार्टमेंट्स है, ये अलाइड सेक्टर्स के, जैसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आए हैं, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अभी जो शुरू हुआ है, इनके साथ काम करके ये जो हमारे जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जो नॉलेज जनरेट होता है, वो कैसे एनजीओ की सहायता से और स्टार्टअप जो सोसाइटल सेक्टर्स में काम करते हैं, उनकी सहायता से कैसे दिया जा सकता है। और जैसे कि पहले भी हमने बताया कि ये एक हम इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जनरली हम वेबिनार में आता है, सुनते चले जाते हैं, फिर हम अपने काम करते हैं। लेकिन हम ये वेब क्लिनिक को एक प्लेटफॉर्म, एक आंदोलन के तौर लेना चाहता है, जिसमें एक नए तरीका से सोचने का और काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा सकता है। हमारे रिक्वेस्ट है कि हमने ये जो एज पार्ट ऑफ दिस द पोर्टल, ISTI portal, that what are the opportunities of this we have created here for submitting the problems and the challenges, your ideas. Please submit here your questions and answers. क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो इस सेशंस में बहुत सारे लोग लेस करते हैं, हम यहाँ इसके आंसर्स कोशिश करेंगे कि वहां जाए। ये एक कल्चरल चेंज भी है, जिसमें हम शुरू करें तो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। और हमारे उम्मीद है कि जब आपने इंटरेस्ट दिखाया और दिखाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म को एक फ्यूचर डायनामिक क्रॉस ब्रिजिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाए, सो दैट तो हमारे सिस्टम में जो गैप्स है कि नॉलेज को एक्शंस में ले जाने का, एक्शंस की जरूरत के मुताबिक नॉलेज कस्टमाइज करने का, और इसमें बहुत सारे जगह है जो टेक्नोलॉजीज को अपस्किल करने का बहुत सारे इश्यूज है, इसी को हम एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए हमने PSA ऑफिस से जुड़े हुए, हम फिकी से जुड़े हुए, हमने जो सिविल सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, हेस्को WWF के साथ। हमारी उम्मीद है कि आप इसी प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाव देंगे। We will really look forward towards your the suggestions, your participation, or any other criticism. So with that, I think we start our this the second day of this third week deliberations, and this will be basically that's mostly the sharing of the experience from our the NGO network, as well as the
the startup friends. So I request first Dr. Alok Juneja from DEF Pune to share their experience of this livestock-based enterprise development, where they have developed, how they have developed the capacity of the community, as well as that how the collaborations with the knowledge organizations can strengthen this entire, the value chain and the ecosystem. And Dr. Juneja, please. Yeah, thank you, Dr. Datta. Good afternoon, all. I am Dr. Alok Juneja, Vice President, BIF Development Research Foundation. I am based at Pune. मैं आज लाइवस्टॉक बेस्ड एंटरप्राइजेस के बारे में चर्चा करूंगा, जो बायफ ने पिछले 53 इयर्स के एक्सपीरियंस से क्या क्या काम किया है और वास्तव में फील्ड में किन किन काम को और करने की आवश्यकता है. कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So basically, BIF, having an experience of 53 years, has worked in livestock development. Basically, we are working in 12 states, and we are having around 5,000 cattle breeding centers and providing breeding services through frozen semen of high genetic merit bulls. And we are the first organization in India to start sex sorted semen production, which was discussed yesterday also. और अभी जो भारत सरकार का भी जो उद्देश्य है और हम भी उसकी पालना कर रहे हैं, अभी इंडिजिनस ब्रीड यानी कि हमारी देसी गौवंश नस्लों के ऊपर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं. और जो भी हम ब्रीडिंग से रिलेटेड काम करते हैं वो सारा हम ऑनलाइन डेटा रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि उसके अंदर उसका एनालिसिस प्रॉपर किया जा सके. Then we provide support services to the farmers by providing some mineral mixtures, dewormers, vaccines. Then for proper feeding of the animals, we provide high quality fodder seeds used research of in we are working as AICRP in collaboration with ICR. So we have various types of seeds available. Then system for bioproduction, that is none. Through training, producer organization formations. Then new technologies, for example, early pregnancy diagnosis, subclinical mastitis testing, sorted semen, then genomic selection, ova pickup and in vitro fertilization. We are also working in goat development through group formation, supplying bucks for breed improvement, as well as goat AI. We are having a laboratory where we are producing frozen semen for goat. Then we help goat breeders for aggregation and marketing support through forward linkages. Then we are facilitating for forward linkages like dairy cooperatives, private dairies, dairy processors, etc. We are working in collaboration with them, providing all these integrated kind of things. Can you go to next slide, please? Now coming to today's topic, scope of livestock enterprises. There is a lot of scope, and working in field, हम जब कार्य करते हैं फील्ड में, तब जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इस चीज की भी आवश्यकता है कि वो अपने पशु को पालें, परंतु उसके साथ साथ अपनी इनकम भी जनरेट कर पाएं, वो एंटरप्रेन्योर की तरह डेवलप हो पाएं. और केवल एनिमल रखने से या उसका मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि वो लेबर को उसमें काउंट नहीं करते हैं, इस वजह से वो आज सरवाइव कर पा रहे हैं. अदरवाइज दे रिक्वायर a comprehensive kind of thing, breeding, health, feeding, management, marketing, all these 4 or 5 things they need to have
as a comprehensive package. And today I'm going to discuss about livestock enterprises, which BIF has developed, and we anticipate and hope the knowledge partners or knowledge organizations would also be helping in developing these concepts, and they'll help us in developing these enterprises. Next, please. So first of all, I'll be discussing about fodder nursery. तो जो पशुपालक अपने यहाँ पर जो अन्न का उत्पादन करते हैं या वेजिटेबल नर्सरी अपने यहाँ पर कैश क्रॉप के रूप में डेवलप करते हैं, वो अगर अपने खेत में अगर कुछ हिस्सा, फॉर एग्जांपल थोड़ा जैसे 2 गुंठा, 5 गुंठा या 7-8 गुंठा अगर जमीन, यानी कि 1 गुंठा इज इक्विवेलेंट टू 100 स्क्वायर मीटर्स, तो इतनी जमीन अगर चारा उत्पादन के लिए अगर स्पेयर कर लें, और जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होने के लिए फॉडर नर्सरी के रूप में काम करना चाहते हैं, वे जो उच्च क्षमता वाली पेरिनियल क्रॉप्स हैं, मल्टी कट वाली जो क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड नेपियर, देन अदर नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक एजोला, कैक्टस, अगर वो डेवलप करते हैं, तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि लगभग आधा एकड़ जमीन पर उनको प्रतिवर्ष लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का आमदनी अगर वो फॉडर नर्सरी डेवलप करते हैं तो हो सकती है, क्योंकि कैक्टस में क्लेडॉट्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, एजोला का भी इसी प्रकार है. देन कमिंग टू साइलेज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कुछ क्षेत्रों में हरे चारे का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि हरे चारे की उपलब्धता कुछ महीनों में बहुत कम हो जाती है. तो जिस प्रकार से हम बाकी चीजों को प्रिजर्व करते हैं, उसी प्रकार अगर हम फॉडर का प्रिजर्वेशन प्रारंभ कर दें, एंड दैट कैन बी डन ऑन ए ग्रुप लेवल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल. ग्रुप लेवल वी हैव ट्राइड, एक स्मॉल यूनिट अगर उसमें लगाई जाए, जो कि अभी पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, वो 4.5 लाख रुपए का एक यूनिट आता है, और ये लगभग 10 टन पर डे की इसकी कैपेसिटी है. तो इसमें मेज का हमने शुरू किया था, फॉडर का साइलेज बनाना थ्रू एफपीओ. So this is working successfully, and they are able to earn around 5,000 rupees per day on 10 ton fodder converted into silage. Few people are attempting for individual level enterprise, क्योंकि पुराने जमाने में साइलेज बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते थे. अभी इसके साइलेज के बैग आने लगे हैं, तो रेडीली अवेलेबल जो साइलेज बैग हैं, अभी 60 किलो का, 65 किलो का, 100 किलो का बैग अवेलेबल है, जो कि बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है. उस बैग में साइलेज बना करके इंडिविजुअल भी एक एंटरप्राइज के रूप में काम कर सकता है, और उन क्षेत्रों में साइलेज को उपलब्ध करवा सकता है जहां पर इसकी चारे की कमी होती है. या नेक्स्ट प्लीज. Then next part, depending only upon milk of the animals is not enough. Yesterday also Commissioner Animal Husbandry Praveen Malik sir was speaking about vermicomposting. So it is essential that all the output of animals is used for production, और फार्मर जो है केवल दूध पर निर्भर नहीं रह करके काऊ डंग, काऊ यूरिन सभी का प्रॉपर इस्तेमाल करे. अगर वो उसका इस्तेमाल करेगा तभी वो गाय को बचा पाएगा और गाय से इनकम प्राप्त कर पाएगा. इसमें वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी वॉश, ये बहुत ही आसान तरीके हैं, और इसके माध्यम से वो वैल्यू एडिशन कर सकता है काऊ डंग का. अभी काऊ डंग एज ए फार्म मैन्योर की तरह इस्तेमाल करना या उसको केवल सीधा जलाने के काम में लेना, वो बहुत समझदारी की बात नहीं हो करके अगर उस काऊ डंग का हम वैल्यू एडिशन करते हैं और वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, केचुआ खाद सभी ने सुना हुआ है. सो दिस एंड वर्मी वॉश, these two things are very easy to adopt. Next please. Next, related to this organic input itself is phosphate-rich organic manure. This we are trying in our working areas. We have tried it in Maharashtra, Gujarat,
and Madhya Pradesh. So number one picture is of biogas plant having a slurry filter. इसमें अगर 2 से 3 पशु अगर किसी किसान के पास में है तो वो अगर उसका गोबर इसके अंदर फिल करता है तो साल में लगभग 10 से 11 सिलेंडर के इक्विवेलेंट उसको गैस मिल जाती है। और जो स्लरी से जो फिल्टर होकर के 90% जो उसका सॉलिड है वो सेपरेट हो जाता है and 50% water is recycled or reused. The slurry is dried and dry cake from filter is used mixed with rock phosphate and some culture, and this is blended in blending machine, and then phosphate rich organic manure which is equally good in comparison to single phosphate manure, and this has been proving very good in the field. अभी जो भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने पाया है कि उपज भी बढ़ती है और ऑर्गेनिक होने के कारण वो उसका शेल्फ लाइफ भी बहुत इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, can we go to next slide please? Next is heifer production और बछड़ियों का उत्पादन. As I spoke, use of sex sorted semen is very very important. अभी के टाइम पर नर बछड़ों की कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे there are chances of getting 90% female cows. So use of sex sorted semen we are already using, and we are producing also all indigenous breeds, all buffalo breeds, all crossbred, purebred, all kind of sex sorted semen is available. So if this is used, we are getting more than 40% conception rate and sex ratio of more than 90%. This is a new technology and आज के वक्त की आवश्यकता है. Second important thing is presently 40%, about 40% animals are either infertile or they are not coming in heat in time. So there may be scarcity of green fodder cause. There are many causes. So if we treat these animals for infertility and synchronize them, तो एक ये गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है. और हम इसके अंदर अगर कुछ काम अगर इस तरह का करें, ब्रीड इंप्रूवमेंट का, हाई जेनेटिक मेरिट सीमन का इस्तेमाल करें और सारी टेक्नोलॉजी का हमारे नॉलेज पार्टनर्स जो हमारे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हेल्प लेकर के, तो हम रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. इन गायों और भैंसों की, इन बछड़ियों की हम एज एट फर्स्ट काविंग, इंटर काविंग पीरियड, सर्विस पीरियड, इस तरह के जो रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. और केवल गाय या बछड़ी या भैंस को पालना सफिशिएंट नहीं है. प्रतिवर्ष एक बछड़ी का उत्पादन हो और नर बछड़ों का उत्पादन नहीं हो तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है. अदरवाइज ड्राई पीरियड ज्यादा होगा और दूध का उत्पादन कम होगा तो उससे लाभ नहीं होगा. नेक्स्ट प्लीज. Then value addition of milk. Of late we are working on this domain also, and we are trying to develop few of the FPOs to have this value addition of milk. So milk processing plant nowadays, very small milk processing plants costing 6 lakhs or 6,50,000 are available, which are having bulk milk cooler and pouch packaging of milk is made available through this milk processing plant. अभी हमने देखा कि कोविड के टाइम पर जो लूज मिल्क था उसकी वैल्यू बहुत ही घट गई थी और जो पाउच वाला दूध था वो बहुत आसानी से फार्मर्स इस्तेमाल, या हम सिटी वाले लोग भी उसको बहुत आसानी से उसका कंजम्पशन हो पा रहा था. तो एक छोटा प्लांट हम चाहते हैं कि कुछ एफपीओज के माध्यम से लगाएं. हमने महाराष्ट्र में एक काटोल में एक एफपीओ के थ्रू खोआ बनाने का भी एक यूनिट लगाया है. इस प्रकार के कुछ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप करके बटर मिल्क, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, कर्ड, घी, कुछ गौशालाओं के साथ मिलकर के भी हम काम कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान में. वहां पर वैल्यू एडिशन ऑफ मिल्क
का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि वो उससे उनको कुछ एडिशनल इनकम प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्लीज। My last slide is about goat value chain. So there is a lot of scope of developing goat in the field. गोट अभी इस वर्तमान समय में मीट के लिए पाली जाती है, परंतु जो हमारे गोट कीपर्स हैं वो गरीब हैं, उनका नग के हिसाब से बेचान होता था। हमने 5-6 राज्यों में काम किया और सबसे पहला कंसेप्ट ये डाला कि इसका लाइव एनिमल मार्केटिंग ऑन वेट बेसिस हो, मतलब कि वो वजन से बिके। और गोट के मैन्योर, गोट का वर्मी कंपोस्टिंग बनाना उसके डंग से, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। गोट की हाउसिंग, मैनेजमेंट, हेल्थ, इस पर भी हम काफी ध्यान दे रहे हैं और ये एंटरप्राइज के रूप में गोट वैल्यू चेन बहुत अच्छा एक विषय हो सकता है। तो that's all from my side. I wanted to so thank you, Dr. Juneja. I think what you have told from your experience, that the entire ecosystem of this livestock management towards the enterprise, and what are the opportunities for collaborations also with the knowledge organizations for improving in the knowledge that you have told very clearly. And in order to take forward this discussions and the experience sharing in the another sectors of the important allied sectors, which is fisheries, I request Mr. Nilkant Mishra from the Center for Aquatic Livelihood, Jal Jeevika, Pune. Yesterday we have heard from Dr. Archan Das about that is integrated aquaculture systems, and also from Dr. Mahapatra. But today we'll hear from Mr. Nilkant Mishra from the experience from here, and how they have improved the community's absorption capacity, as well as the opportunity for the collaborations with knowledge organizations to improve the knowledge. Mr. Mishra, please. थैंक यू सर। तो एक स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। जल जीविका की ओर से, जल जीविका एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे देश के 4-5 राज्यों में हम लोग काम करते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि जितने भी स्मॉल वाटर बॉडीज हैं, सीजनल वाटर बॉडीज, नॉर्मली जैसे ही पॉन्ड और तालाब की बात होती है, लोग 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर की वाटर बॉडी की बात करते हैं, जब पेरिनियल है, जिसमें 12 मंथ पूरे पानी रहता है। लेकिन जहां अगर 5 मंथ 6 मंथ भी पानी है, इवन स्मॉल एंड सीजनल वाटर बॉडी है, उसका भी काफी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम में यूज हो सकता है। तो जल जीविका इस आइडिया पे काम करती है कि एक्वेटिक लाइवलीहुड, फिश एक है ऑप्शंस, लेकिन उसके अलावा और भी काफी चीजें हो सकती हैं कि एग्जिस्टिंग वाटर का इस्तेमाल करके फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड को बढ़ाया जा सके। तो इस समय हम लोग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में हम लोगों ने काम किया है। स्लाइड तो आगे बढ़ाइएगा। पिछले 6-7 सालों में हम लोगों ने मोर देन 25,000 फार्मर्स के साथ काम किया है, जिसमें से अराउंड 900 प्लस, इस साल तो अराउंड 1000 प्लस हो गए अभी तक नंबर। इतने फार्मर्स ने एज ए फीड सीड रियरिंग इंटरप्राइज का यूज किया है। तो जो छोटे छोटे मनरेगा के तालाब है, स्मॉल सीजनल फार्म पॉन्ड है, जिसमें सिर्फ वाटर 5 to 6 मंथ रह सकता है, उसमें भी सीड रियरिंग एक बहुत ही काफी बड़ा लुक्रेटिव इंटरप्राइज बनकर निकल कर आया है। और अभी कोविड के समय हमने देखा है कि सीड का प्राइस, महाराष्ट्र में तो सीड अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे हैं, फिश सीड, और प्राइस जो है बढ़ गया है। तो ये लोकल एंटरप्राइज के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, या नेक्स्ट कर दीजिएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक लर्निंग है हमारी कि जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मर्स को खुद सिखाते हैं और उसके बाद वो लोग उसे अडॉप्ट करते हैं, तो प्रोडक्शन से लेकर उनके जो मार्केट इम्पैक्ट है, फिनेंस रिलेटेड इम्पैक्ट है, इसमें इजिली विद इन 2 प्रोडक्शन साइकिल में 2 टाइम्स से ज्यादा का इंक्रीमेंट हो जाता है, लाइवलीहुड में भी एंड प्रोडक्टिविटी में भी।
तो सिर्फ फार्मर्स को ये बताना कि आप क्या यूज करो फिश सीड प्रोडक्शन या फिश प्रोडक्शन की बजाय, अगर हम उन्हें पूरा साइंस बताते हैं तो देन काफी ज्यादा इनोवेशन खुद फार्मर्स लेके आ जाते हैं। एग्जांपल है जैसे कि केज फिशरी। अब केज फिशरी का जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है वो काफी एक्सपेंसिव है। एक एक केज के मार्केट कॉस्ट अराउंड 1.25 लाख हो जाती है। लेकिन जब हम उन्हें बेसिक सिर्फ फ्लोटिंग केजेस का, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताते हैं कि कैसे वो सिंपल बैम्बू का भी केज बना सकते हैं और उसमें फिश सीड प्रोडक्शन से लेके कल्चर प्रोडक्शन तक कर सकते हैं, तो इन 10 to 15,000 रुपीज एक केज फार्मर कंस्ट्रक्ट कर लेता है। और एक साल के अपने पायलट के बाद बैम्बू से देन दे गो टू जीआई पाइप या फिर प्लास्टिक पाइप, वो उसमें अपना एक्सपेंडिचर को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक इस तरह के पायलट के लिए, इस तरह के कमर्शियल एंगल के लिए एक एक केज यूनिट पे 1 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अभी इंडिया के सिचुएशंस ये हैं कि अभी जिस समय हमारा फिश प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, एनुअल 10 to 11% का ग्रोथ रेट है, काफी ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट से भी इनकम हो रही है, लेकिन ये फोकस्ड करता है मेरीन फिशरी को लेकर। जो स्मॉल एंड सीजनल वाटर बॉडी है, मोर देन 70 लाख हेक्टेयर के हैं पूरे कंट्री में रिजर्वायर, पॉन्ड्स, और हार्डली 50% जो है फिश सेक्टर के अंडर में अभी है। तो अगर हम जैसे नंबर ऑफ वाटर बॉडीज का उपयोग बढ़ाते हैं तो उसमें वुमेन्स एंगेजमेंट, अभी जो माइग्रेंट्स वापस आ गए हैं उन लोगों का एंगेजमेंट, हम इसमें मिलियन लोगों का एब्जॉर्प्शन जो है हर साल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो चैलेंजेस है फिशरी सेक्टर्स की, अगर उसको हम कंपाइल करें तो पुअर एडवाइजरी सर्विसेज एक सबसे बड़ा मेजर इशू है। जितने तरह से जो डिपार्टमेंट्स एंड अदर, जो एक तो सोशल सेक्टर काफी कम एनजीओ इस सेक्टर में है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम एनजीओ एज ए लीड ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ जाए और वो टेक्नोलॉजी को लेकर विलेज पे जाए। तो एक एडवाइजरी सर्विसेज की एक चीज है। देन इनपुट सप्लाई, सीड सप्लाई में एक्सेप्ट बिहार, बंगाल और आंध्रा, मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है जिनके पास में सीड प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, वो डिपेंड करते हैं दूसरे राज्यों पर। देन लॉजिस्टिक सर्विसेज, अभी भी नॉर्मल एक बोलेरो में लोग फिश लेकर चले जाते हैं, आइस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मार्केट में एक तो उन्हें रेट कम मिल जाता है और दूसरा वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग प्लांट तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। जो फैसिलिटी इकोसिस्टम है, सरप्राइजिंगली अभी भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी फिशरी में बिल्कुल ही नहीं है। देन क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जो बैंक के अलावा अदर एनबीएफसी सर्विसेज हैं, तो वो सारे अदर इकोसिस्टम्स के साथ में कैसे फार्मर्स जुड़े, एफपीओ जुड़े। शायद हार्डली पूरे कंट्री में 6 या 7 एफपीओ है जो फिशरी बेस्ड है, तो इस नंबर्स को हम कैसे इकोसिस्टम सर्विसेज से जोड़े ताकि मैक्सिमम वाटर बॉडी एंड उसका कमर्शियल बेनिफिट हो, साथ ही साथ हाउस होल्ड लेवल पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो। काफी सारे केमिकल्स जो जैसे एनिमल हस्बेंड्री में हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन फिशरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो फार्मर्स जो है वो लोकल सप्लायर के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं और ये उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड एम्प्लॉयमेंट का काफी ज्यादा इसमें हमें एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सकता है फिश को हार्वेस्टिंग का, एज ए हार्वेस्टिंग, और वो अभी तक फिशिंग कम्युनिटी के लोगों तक ही सीमित है। अगर इन सब वो चीजों को लेकर अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम और इस तरह के स्किल डेवलपमेंट से जोड़ते हैं तो एनुअल इनकम भी कंट्री की बढ़ती है और मिलियंस में जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है कंट्री के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जल जीविका के साथ हम लोग प्रॉब्लम जो एड्रेस कर रहे हैं कि अगर किसी भी ब्लॉक या पंचायत लेवल पे देखें तो अलग अलग साइज के वाटर बॉडीज, अलग अलग टोपोग्राफी में वाटर बॉडीज है, और एवरी वाटर बॉडीज का यूटिलाइजेशन हो सकता है। जो अपने शॉर्ट ड्यूरेशन पॉन्ड्स हैं या रिजर्वायर हैं, हर एक में एक जैसे यूनिफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको राइस फिश इंटीग्रेटेड से लेकर डक इंटीग्रेशन, गोट इंटीग्रेशन, हर चीज को लेकर देखें तो इंटरप्रेन्योरशिप, नैनो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, मार्केट लिंकेजेस का काफी बड़ा स्कोप है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है। सिर्फ फिश प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर अगर प्रोग्राम हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका आउटपुट काफी लिमिटेड हो जाता है। जैसे ही हम उसको इंटीग्रेटेड कर देते हैं तो राउंड द ईयर अलग अलग इवन स्मॉल मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस को भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं
और वुमेन फार्मर को इंक्लूड करने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग में काफी स्कोप हो जाता है जब हम छोटे स्मॉलर वाटर बॉडीज को इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस प्रोसेस में कोविड के बाद हम लोगों ने काफी रिसर्च किए और नेक्स्ट स्लाइड रहेगा। ये कोविड के जो इम्पैक्ट आए हैं उसको देखते हुए एक रिसर्च किया और एक हम लोगों ने इंटीग्रेटेड मॉडल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एक आजादी मॉडल, एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ये मॉडल हम लोगों ने भी एक डेवलप किया है जो 40 फीट बाय 40 फीट में डेवलप होता है, जिसमें मशरूम प्रोडक्शन से लेकर हाइड्रोपोनिक्स का यूज करते हुए ग्रीन फॉडर डेवलप करना, देन अजोला प्लांटेशन, छोटे से 10 फीट बाय 20 फीट में छोटा सा फिश पॉन्ड है जिसमें अप टू 50,000 सीड प्रोडक्शन हो सकता है फिश का टेबल। तो इस पूरे मॉडल्स में इंटीग्रेटेड फार्मिंग के सारे साइंस इंक्लूड किए गए हैं, प्लस इसमें एडवांस एक्वाकल्चर सिस्टम में जो साइंसेज है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर या बायोफ्लॉक जिसकी हम बात करते हैं, उस साइंस को और हमने इसे एडवांस किया है, जिसके कारण एक छोटे से 10 फीट बाय 20 फीट में भी 50,000 तक सीड स्टॉकिंग हो सकती है। और विद इन 1 मंथ जब वो फिंगरलिंग साइज हो जाते हैं तो फार्मर अगर उसे 1 रुपये पे भी सेल करता है तो मोर्टेलिटी इसमें हार्डली 5% की है, तो 40,000 प्लस की प्रॉफिट इनकम इन एक सीजन पे हो सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कीजिएगा। अब अगर हम इस सीड बिजनेस को साल का 4 महीने में इंक्लूड कर देते हैं तो सिर्फ सीड बिजनेस एंड फिश बिजनेस से, ये जो साइज दिख रहे हैं पॉन्ड का, इस पे एक फार्मर की एनुअल इनकम 1 लाख रुपये कैश हो सकती है। फिर रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होम कंजम्पशन के लिए हो जाएगा। तो अलग अलग इसमें बास्केट ऑफ चॉइसेस हमने डाले हैं, जैसे फिश सीड प्रोडक्शन, हाइड्रोपोनिक्स में इसी पानी का रिसर्कुलेशन से यूज हो रहा है जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है। मेज एंड अदर हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम्स में जो कि गोट फार्मिंग में या फिर लाइव स्टॉक को यूज हो जाएगा। आफ्टर 7 डेज 15 kg तक का ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन हो जाता है। देन इसी में स्पेस है प्लांट नर्सरी की, जिसमें वेजिटेबल एंड अदर प्लांट्स, मोरिंगा एंड अदर प्लांट्स की लोग नर्सरी कर सकते हैं और एवरी मंथ वो 1000 to 2000 प्लांट का सेल कर सकते हैं। देन वर्मी कंपोस्ट डेवलपमेंट, फिश एक्स्ट्रा फिश ग्रोथ करना 200 to 300 kgs एंड बर्ड केजेस भी है जिसपे कि 10 to 20 बर्ड्स वो यूज कर सकते हैं। अगर हमने उसमें लेयर बर्ड का इंक्लूड किया तो एनुअली उनको 150 to 200 एग्स भी मिल जाते हैं। तो एक स्मॉल सीजनल फार्मर्स इन्वेस्टमेंट एक छोटे से एरिया अप टू मैक्सिमम 2000 स्क्वायर फीट एरिया में अगर वो करते हैं सारे प्रोडक्शन सिस्टम को लेकर, तो एवरी वीक उनका एक प्रोडक्शन सिस्टम चलते रहता है जो उन्हें हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी भी देता है और उन्हें रेगुलर एक इनकम भी अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम से जोड़ के रखता है। एक जो इसमें हमने और एक्स्ट्रा ऐड किया है कि इसमें जो ड्रेजरी है वो डिडक्शन का प्रोसेस रखा है, तो इवन घर की महिलाएं या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी इस फार्म को 2 लोग करके इंक्लूड करके 2 लोग इसका मैनेज कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी सिस्टम में हाइड्रोपोनिक्स है एंड ग्रीन माइक्रो ग्रीन प्रोडक्शन होम कंजम्पशन के लिए, इवन अर्बन एरिया में भी वो इंक्लूड हो सकता है कि एक 50 स्क्वायर फीट में मैक्सिमम 20 लीटर्स बकेट के साथ में एवरी डे वो 10 to 12 kg अगर प्रोडक्शन की उनकी स्किल बढ़ जाती है तो अप टू 15 kg वो ग्रीन फॉडर ले सकते हैं। और ये यूजफुल हो सकता है फार्मर्स के लिए जो लाइव स्टॉक में है, प्लस इंटीग्रेटेड फार्मर्स के लिए, और ये एक स्मॉल ग्रुप इनिशिएटिव भी हो सकता है जो इससे पहले अभी सर बता रहे थे बायफ से कि ये एक तरह से एक माइक्रो एंटरप्राइज भी डेवलप हो सकता है कम्युनिटी के लेवल पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी मॉडल में हमने एक माइक्रो एक्वापोनिक सिस्टम सारे डेवलप किए हैं, वर्टिकल टॉवर्स, जो काफी कुछ अभी एक्वापोनिक्स के नाम पर, हाइड्रोपोनिक्स के नाम पे सिटी में भी लोग चल रहे हैं, लेकिन उसके साइंस को हमने डीमिस्टिफाई कर दिया है। तो विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 to 2000 लीटर ये एक सिस्टम फिश एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छा हो सकता है, प्लस ग्रीन लीफ वेजिटेबल के लिए, जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं फ्रॉम स्कूल डेज। मिड डे मील स्कीम में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर में एज ए अर्बन एरिया हॉबी सेंटर के रूप में, ताकि लोग बेसिकली साइंस को समझ जाए। एक बार जब वो साइंस से उनका परिचय हो जाता है, फिर इसे मॉडल को एक्सटेंड करने में, एक्सपैंड करने में
उन्हें कम मेहनत लगती है एंड वो धीरे धीरे इसे एक कमर्शियल वेंचर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसी हाइड्रोपोनिक्स मॉडल को अगर अर्बन एरिया में, रेस्टोरेंट में, किचन में अगर हम उसमें मेज का ग्रीन फॉडर नहीं यूज करते हैं तो उसमें हम माइक्रोग्रीन प्रोडक्शन ले सकते हैं। ग्रास, व्हीट ग्रास से लेकर मेज, सरसों या मस्टर्ड या एमरेंथस, अलग अलग तरह के हाई वैरायटी न्यूट्रिशन जो हाउस होल्ड सिक्योरिटी भी देता है फूड का, इवन किड्स को और दूसरे लोगों को, कंज्यूमर के साथ हम एंगेजमेंट ले सकते हैं सेफ एंड हेल्दी फूड प्रोडक्शन को लेकर। नेक्स्ट स्लाइड। जो इस पूरे प्रोसेस, और इसमें मशरूम भी हमने ऐड किया है कि एक ट्रे का जो मशरूम जो एक पूरे साइकिल में आता है वो पर मंथ 12 to 15 kg मशरूम प्रोडक्शन लिया जा सकता है। अब अगर हम इसकी ROI देखते हैं तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट जो है अराउंड 1.25 लाख का जाएगा मैक्सिमम विद ऑल द कवर एंड एवरीथिंग। लेकिन उसमें जो हम अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम के साथ ऐड करते हैं तो 2 लाख प्लस आउटपुट एक फार्मर और एक एंटरप्रेन्योर ले सकता है। जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ती है जिस नंबर को हम लोगों ने अप टू 3 लाख तक भी वो ले जा सकते हैं अगर उसमें मैक्सिमम साइकिल ऑफ फिश सीड प्रोडक्शन लेकर चले। जो दूसरी इसकी बेस्ट बेनिफिट है कि एक तो ये माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है, और चूंकि एक फिजिकल स्पेस है तो इवन NGOs या जो ट्रेनिंग सेंटर है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रॉपर ट्रेनिंग स्पेस, एज ए प्रॉपर एक्वा स्कूल, जहाँ पे विलेजर्स, कम्युनिटी मेंबर्स आकर स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये डुअल पर्पस फुलफिल करता है, एक इंडिविजुअल के लिए फूड प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन का, उसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर बेस्ड एजेंसी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइवलीहुड ट्रेनिंग सेंटर का। नेक्स्ट मॉडल प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। और ये एक मॉडल है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर पार्टनरशिप चाहिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन प्लस सीड जैसे DST की एजेंसी के साथ में। ये एक मॉडल है एक्वा स्कूल का, जहां पर सारे लोग आकर विलेज के सीख रहे हैं पूरे इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को। एक डेमो यूनिट भी है, और यहाँ से जो ट्रेंड फार्मर है वो एज ए माइक्रो एंटरप्रेन्योर अपना सेटअप कर सकते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में आ जाते हैं तो वो एक FPO का फॉर्म ले लेता है, और फिर उन्हें हम क्रेडिट लिंकेजेस, प्राइवेट सेक्टर, इनपुट सप्लायर एंड आउटपुट के साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं मार्केट लिंकेजेस को। तो ये एक कंप्लीट एक स्वतंत्र निकाय बन जाती है पंचायत स्तर पे, गांव के लेवल पे। और इससे जो रिसोर्सेज डेवलप होती है, क्योंकि उसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और सारी क्वालिटी फार्मेटिव लिए हुए हैं, तो इसको एक QR कोड से जोड़ते हुए क्वालिटी सर्कल हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्शन आएंगे वो एक क्वालिटी की होंगी, जिसका फिर एक प्रॉपर मार्केट लिंकेजेस करना आसान होगा। और ये एक साइकिल की अगर हम बात करें 2 से साल के बाद, तो हर एक एक्वा स्कूल अपने आप में एक इंक्यूबेशन सेल, जो मैं कल भी परसों बात कर रहा था सर के साथ में, दत्ता सर के साथ, कि हम एक ये कम्युनिटी बेस्ड इंक्यूबेशन सेल की तरह हम बात कर सकते हैं कि ये सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है जहां पर मैक्सिमम फार्मेट सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये एक पूरा, जब हम इसमें क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी सबको लिंक कर देते हैं, मार्केट लिंकेजेस, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर भी यहाँ आ जाती है, तो ये एक इंक्यूबेशन सेल बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इस मॉडल में वुमेन्स को दूसरे एक जितने भी एक्सक्लूडेड कम्युनिटी हैं उनके साथ में इवन लैंडलेस लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। जो इसमें जो बेस्ट चीजें निकल कर आ रही है, जो नेक्स्ट हम लोगों ने अभी किया है, कि इसी के साथ में अगर हम एग्रीकल्चर में सॉइल हेल्थ कार्ड के कॉन्सेप्ट है, और अगर हम विलेज के सारे वाटर बॉडीज के वाटर क्वालिटी कार्ड का हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, तो हर एक फार्मर स्पेसिफिक एडवाइजरी जनरेट हो जाता है। और फिर ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कुछ पायलट के बाद इसे हम नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्केल कर सकते हैं, कि अलोंग विद सॉइल हेल्थ कार्ड एक वाटर हेल्थ कार्ड का भी पैरामीटर गवर्नमेंट लेकर आ सकती है, जहां पर मार्केट लिंकेजेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एडवाइजरी, हर एक चीज एक जगह क्लब हो जाएगी। और इसी को जोड़ते हुए हम लोग एक IT एडवाइजरी प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर। 2 दिन पहले ही एक्सेंचर ने उसे और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेबसाइट पे इस सारे प्रोसेस जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसे लॉन्च किया है। होपफुली इन 3 मंथ वी विल बी एबल टू प्रोवाइड every geography का location specific advisory to farmer based on their water quality, based on their production management parts. Next part please.
और जब हम इसको आईटी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये एक सिस्टमिक चेंज के लिए एक टूल्स बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। मैं अपनी बात यहीं पर रखता हूँ, खत्म करता हूँ कि एक इंटीग्रेटेड मॉडल एक छोटे से लोकेशंस में विद 40x40 या अप टू 2000 स्क्वायर फीट कैसे साल में 2 लाख तक की इनकम मिनिमम और प्लस घर के लिए फूड सिक्योरिटी हम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच नीलकांत जी। आई थिंक आपने एक बहुत ही अच्छा आत्मनिर्भरता की जो मॉडल है around the aquaculture and the integrated aquaculture systems you have given your Azad model. We would be really interested to work with you for implementing many of your these ideas. Where I see that it's wonderful examples where the the knowledge has gone into the field level along with the capacity building or the knowledge capacity building of the community. So हम आपके साथ जो काम करना चाहते हैं दूसरे शायद ये मॉडल को हम ये जो देश की दूसरे स्टेट्स में भी इसकी हम इसको लेके टेस्टिंग किया जा सकता है क्योंकि वो भारत सरकार की काम है। और मेरे सबसे बढ़िया जो आपको लगा है कि यू हैव ब्रॉट रियली द सिस्टम लेवल द इश्यूज and how like your experience you have addressed that. I really thank Nilkant ji for your this wonderful the deliberations. Please हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कोई questions बहुत सारे आ रहे हैं आपको आपने जब हमारे नॉलेज की पास में जो आग लगाया उसको बुझाना आप ही को पड़ेगा। तो प्लीज मैं हूं सर। So the next the discussions we will take it forward in another important area of the dairy farming, but this time with a different the stakeholders. As like we have heard mostly from the non-governmental organizations who work at this industry, but the startups are also the new the players as a setu between the knowledge and the community. And here we have we will hear from Move Farm in this type of initiatives and about their experience. And I request Mr. Abhijit Mittal, Abhijit, as you have seen in these two other presentations, that how they have tried to link with the the S&T, the science and technological issues with the community. I understand that your first time we are interacting with the DST. Your focus being on being a the startup is mostly towards your the commercial and the business aspects. But I really request from your field level experience, if you can give some clues that how in this area the science and technology the organizations can work along with startups are all not only for a business farms, but they are always looking for a new knowledge, infusions into them. So with these comments, I request Mr. Abhijit Mittal from Project Move Farm to share your, the experience and to enrich this platform. Thank you. Abhijit. Thank you so much, Dr. Debapriya. Hello. Yeah, I can hear you. Please. Yeah, you're audible. Please. You're audible. Please. Thank you so much. Yeah. I'm very humbled by the kind introduction that you have given, and I thank Dr. Debapriya for this wonderful stage that you have given me. Also, I thank the government of India for taking such an initiative. It's a beautiful initiative connecting science and technology with the budding entrepreneurs and the startups. So I am, just to give you a brief background, I'm Abhijit Mittal. I'm a graduate from one of the prestigious institutes of India, IIT Roorkee, in 2017. And I'm one of the co-founders of Move Farm. Move Farm is a dairy tech full stack platform. We are 4 co-founders, and I'm the chief product officer at Move Farm. Can you go to the next slide, please? Yeah. So just to give you a brief introduction about how a dairy farmers look like in India,
as mentioned by Alok ji and Neelkant ji, they've already mentioned what the state of Indian farmers are, but still. So a typical Indian farmer has 4 to 5 cows, 8 to 10 liters of milk, and roughly $1,500, which is approximately INR 1 lakh rupees a year. So that's not a very big income that Indian farmers are earning. Usme se bhi of the percentage that they are earning, almost 70% goes into feed, fodder, finance, and all these things. So remaining 30%, which is roughly 30,000 annually, is what they get. So currently the plethora or the plight of the Indian farmer is not so good. Can you move to the next page, please? So this is just one farmer. We have 100 million farmers in India. India is the biggest milk producing nation. We are at this stage that we are exporting milk to outside countries, but still, if we compare India to the outside world, there is a lot of disparity. Can you please move to the next slide? So in India, India has the highest cattle inventory. We have approximately 300 million cows in India. But the stark contrast you see of the Indian cattle production versus the outside in the likes of Israel, Europe, Denmark, and Australia, there is a huge difference. India produces 4 liters of milk, whereas the countries like the Western countries, the European countries, and all, they are producing up to 30 liters of milk. And that's where you can feel the difference कि हमारे farmers को वो चीज नहीं मिल पा रही है जो उन farmers को मिलती है. They have high production, they have good quality milk, and they have all the support system that they require. But the Indian farmers are not getting everything, and still we are the largest producer, the largest milk producer. So there is a stark difference between the reality, जो कि actually में है, and versus what we are giving it to the end beneficiary. Because everything, whatever जितना भी हम milk, which is almost the 14% nutrition or the protein that we take currently, वो है, उसका जो end beneficiary है farmer, he is not getting paid adequately. Can you move to the next slide? Yes. So this is a very recent phenomena that happened. This guy from MP, he had to sell his cattle for as low as 6,000 rupees to get his child, because आजकल कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा सभी ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं, तो इनके लिए स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है. So for just to buy a smartphone, he had to sell his cattle livelihood, जो कि इंडिया में most of the farmers, they have the secondary livelihood, they are dependent on cattle. उनको सिर्फ 6,000 rupees में बेचना पड़ा. So that's the plight of the Indian farmers, that to fund their children education, they had to sell the cattle. Another example, we had this कि एक farmer ने हमसे हम बहुत ज़्यादा farmer से पूछते रहते हैं, reviews देते रहते हैं through Facebook, through Google Play Store. और ऐसे एक farmer का हमने comment देखा था जो कि हमें बहुत ही खराब लगा उससे कि this farmer, see the plight of this farmer, he's writing that number बहुत late दिया क्योंकि अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट चुका. So that is the kind of plight that we have seen to end farmers, and at Move Farm, our only mission is to make these farmers prosperous. हमारा एक ही vision है कि हम पूरे भारत में जितने भी डेयरी किसान हैं उनको उन्नत बना सकें, उनके लिए हम काम कर सकें. That is the only mission for Move Farm. We every day, हम में से सब लोग जितने भी लोग हैं अच्छे पढ़े लिखे अच्छे इंस्टीट्यूट से आए, from all our employees as well as the founders are from IIT, Stanford and London School of Economics, but still we have just one dream, to make these farmers prosperous. इनकी इनकम बढ़ेगी तो वो क्या कहते हैं, एक सुकून जो मिलता है वो चीज मिलेगी. Can you please go to the next slide? Yeah. So ये जैसे आलोक जी ने मेरे से पहले और नीलकंठ जी ने भी मेरे से पहले बताया कि 4 जो इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम एक फार्मर को चाहिए होता है, ये 4 में सारी चीजें आ जाती हैं. तो एक फार्मर को एडवाइजरी चाहिए होती है कि उसको क्या करना है, कैसी फसल बोनी है, या फिर कैसा चारा डालना है, कैसा what nutrition should they provide
to the cattle. That is the most important thing. So one is the advisory that they need. They need experts. They need financial experts. They need insurance experts. They need nutrition experts. And apart from that, soil and all experts for their जो भी वो फसल लगा रहे हैं, जो भी वो कैटल को रख रहे हैं, तो उसके लिए एक एडवाइजरी की रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा उनको एक ई-कॉमर्स की रिक्वायरमेंट. सेम स्लाइड प्लीज, द प्रीवियस स्लाइड. then comes the e-commerce part. E-commerce as in उनको एक सस्ते रेट पे या फिर एक अच्छे रेट पे उनको इनपुट्स चाहिए. गुड क्वालिटी इनपुट्स इज व्हाट दे रिक्वायर, कि वो जो भी फसल बो रहे हैं या फिर जो भी कैटल को फीड दे रहे हैं, उनको एट गुड प्राइसेस is their requirement. The other thing is the financial services. Just to give you a fact, India में only 20% of the smallholder farmers are getting finances from the formal sector. Rest of the 80% farmers are either getting through informal sector, जहाँ पे हमें पता है कि 2% और 3% interest rate होते हैं monthly, which is roughly 24 to 30% और more के interest rates पे उनको loan repay करना पड़ता है. काफी सारे more than 50% farmers are not getting the financial services. किसी भी एक business को चलाने के लिए finance सबसे ज्यादा important requirement है. Working capital, long term capital, ये सारी requirement एक farmer की भी same ही requirement होती है. Currently there is no infrastructure to provide them, क्योंकि इन farmers का ना सिबिल स्कोर होता है, ना ही कोई ऑनलाइन इनके बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बैंक्स इनको लोन नहीं देती, ना ही कोई और थर्ड पार्टी सर्विसेज और एनबीएफसीज दे आर अनविलिंग टू लेंड देम, बिकॉज नहीं पता कि कौन फार्मर वापस लोन रिपे करेगा, कौन डिफॉल्ट करेगा. सो देयर इज अ ह्यूज गैप जो कि फार्मर्स, there are very good farmers, we know, we work with them, there are very good farmers, but they are not getting the adequate financial services. And apart, not just the finance part, but also the insurance part. Insurance may be, because there is a pool of farmers जो कि एक good farmers हैं और एक bad farmers हैं. Because of the bad or the malpractices of some of the few farmers, बाकी farmers के बीच, बाकी farmers को insurance companies distrust करती हैं. There is no infrastructure जो कि उनके बीच में जो अच्छे farmers हैं उनको identify करके उनको insurance services at good premium prices provide कर सके. So that's where just in India only 9% of the insurance penetration is there. So there is also a huge gap. And the fourth thing is market linkage, जो कि सबसे बड़ा pain point है. आज के रेट में 30 से 35 रुपए is the milk price. आप कहीं भी जाएं, पंजाब में जाएं या महाराष्ट्र में तो थोड़ा और कम मिलेगा, पंजाब में थोड़ा ज्यादा मिलेगा. But barely getting a liter of milk at 30 to 35 rupees, which the consumers are consuming at a much higher rate. Farmers के लिए sustain करना बहुत मुश्किल है. इतने कम दाम पे farmers sustain नहीं कर पाते हैं. उनको, क्योंकि डेयरी किसानों की बात करें, उनको कैटल के लिए उनको फीड देनी पड़ती है, उनको अच्छे शेड में रखना पड़ता है, देन प्रॉपर उनको हेल्थ सप्लीमेंट्स देना पड़ता है. तो द रिक्वायरमेंट इज दैट दे गेट गुड प्राइसेस, बिकॉज सारे फार्मर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी मिल्क, बट देयर इज नो infrastructure to provide a market linkage. So these are the four most important things that a farmer needs, and ये सारी चीजों में सारी चीजें उसकी कवर हो जाती है. अगर मैं एडवाइजरी, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल और मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कर दूं, these are all the requirements of this farmer, and we call this farmer एक हमारी तरह ही एक, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है. उसको भी अपना बिजनेस चलाना है, उसको भी उसका कॉस्ट कम करना है और इनकम बढ़ानी है. So that's how these farmers also see their cattle or the agriculture farming as a business. तो उनको भी अगर उनका मुनाफा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ओवरऑल सप्लाई चेन बेटर होती जाएगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So this is what we are doing at MoveFarm, and this is MoveFarm's vision. Currently, जैसे मैंने आपको बताया कि advisory, e-commerce, financial और market linkage, these are four requirements of the farmer. We're trying to cater all the requirements of the farmer. So MoveFarm is a full stack platform जो कि एक टेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी सर्विसेज. तो MoveFarm कनेक्ट करता है फार्मर को बाकी सारी सर्विस प्रोवाइडर से. तो आप जैसे लेफ्ट साइड में इफ यू कैन सी दिस इज द MoveFarm एप्लीकेशन. अभी करंटली मेनली फोकस एडवाइजरी पार्ट पे, बिकॉज दीज फार्मर्स they do require knowledge, they require extensive hand holding, because they don't know what is good for them, what is bad for them. So MoveFarm started in 2017. एक प्रोजेक्ट मूव के तौर पे शुरू हुआ,
we started going on ground. Veterinarians को हर एक घर में जाके cattle को देखते थे, उनकी problem समझते थे. We realized that there is a huge gap कि एक farmer को बहुत सारी requirement है. That's when we realized, and in 2020 we launched this application, MooFarm application, which is available on Android. Currently, what a farmer can do, he can directly from the eDairy Mitra call a veterinarian. He can use a phone call or a video call और अपनी कोई भी problem पूछ सकता है. So what we have realized is veterinarian का घर पे जाना is not important. Veterinarian जब घर पे जाता है तो 300-400 रुपए ले लेता है, बट वही veterinarian घर बैठे बैठे फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है थ्रू फोन कॉल और वीडियो कॉल. उससे क्या होता है कि हमारी वो रेट 400 रुपए जो फार्मर देता था उससे उसको 25 से 50 रुपए ही देने पड़ते हैं. दैट डिक्रीजेस अ लॉट ऑफ कॉस्ट, और ये सारा मुनाफा फार्मर के पास चले जाता है. So this is the main feature that we have currently is the eDairy Mitra, जहाँ पे farmer directly can connect with the veterinarian. Apart from that, there are features like dairy passbook and cattle, जो कि वो अपना हिसाब किताब भी रख सकता है. तो dairy passbook के थ्रू कितना खर्चा हुआ, कितना नुकसान हुआ उसको, कितना उसने एक्सपेंस किया, all these things he can manage. Apart from that, cattle को भी मेंटेन कर सकता है कि cattle कब हीट में आई, कब उसकी पीडी करानी है, कब उसको डीवर्मिंग करनी है, ये सारी चीजों का हिसाब किताब रख सकता है. So that's just the first stage. The next feature that we are launching very soon is the cattle trading. So if you see this vision of connected commerce, we call it a connected commerce क्योंकि हर एक चीज अपने आप में कनेक्टेड है. तो अभी हमने एडवाइजरी शुरू करी फार्मर्स को देना. नेक्स्ट वी आर लॉन्चिंग कैटल ट्रेडिंग. फार्मर को एक ही प्लेटफॉर्म पे आके आपस में गाय भैंस खरीद बेच सकते हैं. इससे क्या होगा, फार्मर्स को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे. सेम प्लेटफॉर्म पे वो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं. नॉट जस्ट इन पंजाब, दे कैन ऑल्सो बाय कैटल फ्रॉम हरियाणा, राजस्थान, मे बी फ्रॉम तमिलनाडु एज वेल. तो फार्मर्स कहीं से भी अपनी कोई सी भी कैटल खरीद सकते हैं. So this is the second feature. Going forward, we are also focusing on creating a lot of micro entrepreneurs. जैसे नीलकंठ जी, आलोक जी ने बताया कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है. माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आर पीपल जो कि ग्राउंड पे हैं, काफी समझदार लोग हैं, वो फार्मर्स को समझते हैं. हो सकता है उनमें से काफी लोग डेयरी फार्मर्स हैं, बट उनको पता है कि फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम्स है. हमारे अभी मूफार्म प्लेटफॉर्म पे कम से कम 100 विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि फार्मर्स के पास जाते हैं, उनको एप्लीकेशन समझाते हैं क्या एप्लीकेशन है, और उनकी हेल्प करते हैं किसी भी चीज में. गोइंग फॉरवर्ड, वी वुड आल्सो रिक्वेस्ट द सोसाइटी दैट इफ वी कैन कम टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड वी कैन एसोसिएट, तो फार्मर्स को बहुत बेनिफिट है. थ्रू हेल्थ सप्लीमेंट्स, वी कैन प्रोवाइड हेल्थ सप्लीमेंट्स टू दीज फार्मर्स एट लो कॉस्ट. वी कैन प्रोवाइड फीड टू दीज फार्मर्स एट लो कॉस्ट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल सर्विसेज. अभी finance का बहुत ही, there is a huge gap on financial services. So we are also trying to provide them credit and insurance services. उसका pilot शुरू कर रहे हैं. And then finally access to markets, because this is the major pain point कि farmer जब तक अपना जितना भी produce कर रहा है वो जब तक market में नहीं बेचे तब तक उसको सही मुनाफा नहीं होगा. So that's the pain point that we are solving, and this is the MooFarm vision of building a connected commerce. Next slide, please. So this is a MooFarm farmer, how we have till now benefited our farmers. Our current focus is Punjab, Haryana, Rajasthan, and we have also worked with farmers in Maharashtra. And what we have seen is 30% increased farmer savings. So जितना भी वो कमा रहे थे farmers 4 to 5 cattle, we have increased 30% of their savings currently. 20% in the increase in milk per cow because of the good practices that they are following. वेटनेरियन से रेगुलर बातचीत करना, कैटल को मेंटेन करना, बही खाता को मेंटेन करना. वी हैव सीन दैट फ्रॉम दोज एडवाइजरी सर्विसेज ओनली दे हैव इंक्रीज्ड 20% ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन, एंड 90% ऑफ द फार्मर्स दे हैव सेड कि उनकी डेयरी बेटर चल रही है पहले से. तो दैट्स द इम्पैक्ट. एंड सिर्फ एक ये चीज देख के हमें सुकून मिलता है कि वी आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. ऑल्दो बिजनेस इज डिफरेंट, to be a sustainable enterprise, we have to do business. But apart from that, this is the main mission, that our farmers are happy. And for this, this is MooFarm's vision.
Next slide, please. Right. So this is my view that how different societies can come together. NGOs like BIAF can help in spreading awareness amongst dairy farmers. We invite all the NGOs in the likes of BIAF that we collaborate together for the betterment of the farmers. They can help us in increasing the awareness of the dairy farmers. We are also connected with internet sathis. A lot of internet sathis are there in Rajasthan, जो कि application promote करते हैं. So similarly, these NGOs can come together who can make these farmers more literate. They can help in increasing the animal nutrition ka state. Then also, like Alokji mentioned, creating FPOs and market linkages, because this is the need of the hour, to create more and more FPOs in farmers को सिखाया जाए कि how they can become micro entrepreneurs. Because what I have seen in cities like Bangalore, Pune, Delhi, NCR, consumers they are ready to give high prices just for the good quality of milk. So जब consumers are ready to pay high prices, why are not those prices going to these farmers? उन farmers के पास आज भी 30 से 35 रुपए जा रहे हैं, जबकि consumer is ready to pay 60, 65, even 70 rupees for good quality milk. So these NGOs can come together there. Then Department of Science and Technology, it's a very esteemed institute, Indian institute. तो वो हमारी finance infrastructure में help कर सकता है कि how to build that financial infrastructure ताकि इन farmers को direct benefit हो. Improved insurance services, again बहुत ही बड़ा एक gap है between the insurance companies and the farmers. If the Department of Science and Technology can come and make this collaboration happen, that end farmers would be the farmers would be the end beneficiary. Then एक सबसे important request रहेगी हमारी science and technology से कि transparent milk pricing हो. आज मंडी prices are very transparent. हर एक को मंडी prices दिख सकते हैं, but अभी भी milk pricing is very intransparent. हर एक कंपनी अपना milk pricing अलग set करती है. If we can come और एक collaborative effort से एक transparent milk pricing ताकि farmer decides कि कहाँ पे उसको milk डालना है, किस society पे milk pour करना है, that's the farmer's choice. अगर वो transparent milk pricing हो जाए तो that would be a great benefit for the dairy farmers. And better breed कि institutions like BIAF can help in these, that availability of the better breed, and startups like us can collaborate with all the stakeholders, and we become a platform that are directly linked with these farmers and connect all the stakeholders to provide services to these farmers. Because हर एक एरिया में टेक्नोलॉजी का यही एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो तमिलनाडु, आपको हर जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ता. Anybody can download the application from anywhere, even to the remotest location in the world, and he can benefit from the technology. So that's it about myself. Thank you once again for giving me this opportunity, and really appreciate the efforts of Department of Science and Technology for such a good initiative. Thank you. Thank you, Abhijit. Thank you for the bringing your practical and operational experience to the world of knowledge, because sometimes the knowledge forgets the reality on the ground. And this Science-Society-Setu we are trying to build so that the the knowledge remembers the reality of the operations of the field, and also the operations in the fields, the efficiency improves with the relevant and appropriate knowledge transfer. So we would like to, in future we'll be in discussions with you that how the proposed collaborations, like, these are the new type of the collaborations, the opportunities we find, like, as you have proposed that the startups along with the, S&T enabled NGOs, along with we'll find it out how the knowledge organizations can work together with the DST. But like DST, like Ministry of Science and Technology, being basically Science and Technology Ministry, like some of these proposals, but we cannot do. But we can always use the PSA office to bring the the line ministries like Ministry of Animal Husbandry, AHD, like and really what the real systemic problem you have indicated from below can be addressed. Thank you very much, Abhijit, for your
your presentations here, and please be with us, because we know that India's the startup vibrancy is there. Like the young peoples like you are now with the experience of the global knowledge is going to the field. So this you can be a very good the cement for making this bridge between the the science and the knowledge and society. So I will request you to be we should be in touch. We should make this platform to become more useful and dynamic. Thank you again, and I now request my colleague Rahul Nair from the PSS office, the Agni, to take over for these next sessions of this panel discussion. And Rahul here. Rahul, please. Thank you so much, sir. And it's been thank you very much to the participants today for their for their conversations and their briefings and ideas that they've shared with us. It's been a pleasure to listen to all of them. आप सभी को नमस्कार. मैं राहुल नायर हूँ. मैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की अग्नि कार्यक्रम को संभालता हूँ. और अग्नि कार्यक्रम जो है टेक्नोलॉजी और मांग को संबंधित करता है. यानी कि जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं या तो स्टार्टअप में या तो अनुसंधान केंद्रों में, और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं या तो सरकार में या तो उद्योग में या तो एनजीओ में भी, इनको हम आपस में वो हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, हम आयोजित करते हैं इन्हें, और इसको संबंधित करके हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का मूल्य जो है, टेक्नोलॉजी का फायदा जो है, हम कैसे प्राप्त करें. अब डीएसटी और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के लिए ये प्राथमिक है कि हम सारे देश में यही करें कि हम हमारे अनुसंधान केंद्रों में, हमारे स्टार्टअप में जो टेक्नोलॉजी तैयार हो रहे हैं, उनकी लाभ जो है, उसका फायदा जो है, हम समाज के सामने कैसे पेश करें, समाज के लिए कैसे मौजूद करें. इसको यही थीम को बढ़ाने के लिए आज हम ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में हम काफी कुछ सुनने वाले हैं. ये हम खास करके विशेष तौर पे हम ये देखना चाहेंगे कि आजीविका के क्षेत्र में हम आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं. जो आजीविका में जो लगे हुए हैं, जो किसान लगे हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाया जाए. हम इसको देखेंगे. हमारे यहाँ पे आज दोपहर को हमारे 4 प्रेजेंटेशन होने वाले हैं. We should like to kindly start, please, with Dr. B.K. Datta and Mr. Kunal Naskar from VIB NIMPIT. They're going to be talking to us about beekeeping technology as a livelihood option for the Sundarban area in eastern India. So if I may kindly request the DST facilitation team to put the presentation up on beekeeping technology. And if I could kindly request Dr. Datta and Mr. Naskar to please begin their presentation. I should also like to kindly request the participants to limit their comments to about 10 minutes. That's important to make sure that the speakers after you also have the opportunity to be able to cover their different technologies. We look forward very much to your presentation. Thank you very much. Please do start, if I may request you, Dr. Datta and Mr. Naskar. I think you might be on mute. We're unable to hear you. Dr. Datta, can you hear us? I've just put a message up for everyone here. I've just put a message up in the chat box in case we're not audible. Hello, am I audible? Yes, you're audible now. Please do proceed. Thank you. I think Dr. Sir is okay. I'll just check in.
Thank you to all of you for being this, giving this opportunity. And as a Vivekananda Institute of Biology, we are the GST supported organization. Next slide, please. Yes, we are in the Sundarban. In the Bhip is a South 24 Parganas, and we have one WTP Women's Technology Park in Sagar Island. So both are in the Sundarban area. Next slide, please. We are globally well known for its richest of the biodiversity. Out of these 106 islands, 54 are inhabited by the people, and also the Sundarban is an archaeology of the 106 islands. Next slide. Okay, major concern area is for infrastructure, and we are working with the communication facilities, high poverty Indian, and the clean drinking water, and the health and education services also. So we have all the technology service provided. Next slide. Okay, under this Deep Core Support Group organization in Sundarban, we have the R&D relevant technology, that is the adaptation and modulation and design model for technology delivery in the Sundarban. And under the STI hub for Sundarban, there is the identification through the national resources mapping, and also the NGOs for grassroots level. We are supporting the organization. Next slide. Now coming to the, yes, it's a Sundarban area. There is a major occupation in the people, is, as we know, that the 85% people are the agriculture related, and the honey collection is the 20%. Now coming to our next slide, and that is our main today's topic. There's a beekeeping technology as a livelihood option for Sundarban. And myself, Kunal Nosko. And just as you know that this is in Sundarban is a rich source of natural bioresources of economic importance. However, little efforts are made to effectively apply technological tools that are made to be tool converting these diverse bioresources into a useful products for their economic development and as well as the employment generation. So in this context, VIB has implemented a Sundarban beekeeping cluster that's aiming to organizing the honey collectors in a groups, impart skill development program, and manage the collection and testing, processing, and marketing the product under the Atma specification and also the ROCA specification. ROCA is the Rajasthan Organic Certification Agency. We have got the organic certification also for betterment of the financial and social status of the disadvantaged group for honey collectors. In this also, next slide, please. Yes, that is the global scenario. That is, we know that about 15 countries together contribute 90% of the global production. And also, major honey production countries is also the China, India, and Mexico. Next slide. This is an Indian scenario. As you know that India is a rich and varied vegetation. There are 45,000 species in Sundarban area, which comprises 7% of the world's flora. And our Indian species is mainly Apis serena, Apis mellifera, Apis florea, and Apis dorsata. Also, is the European species is there. There is a Apis mellifera. I am coming to the next. The major portion of honey comes from the wild bee, that is the Apis dorsata. Next slide. That is the Sundarban scenario. There are 51.7% is the Sundari. And also we know that the Goran Gewa trees is also there and covered with the Kevra tree. That is the local name. And maximum the season of the Sundarban in the month of January and February. The migratory insects are coming, but procurement time is in the month of June and July. And we know that the bees make their hives in the branches of Kevra tree because those trees contain more leaning branches. Next slide, please. Yes, this is the Sundarban honeybees species is there. Out of them, we know that the Apis mellifera is the European bee that is introduced 3 decades back in the Sundarban through Research Center of CBRTI Pune. We deal with Dorsata, Serena, and Mellifera. We noticed few phenomena during recent super cyclone. Local bees such as Dorsata and Serena left their hives 2 days before the cyclone struck to some unknown safe location and returned back after the cyclone was over. But problem is that these species like Mellifera had maximum casualty since they were not working, knowing what to do. Next slide. Okay, this is the brave honey collectors of Sundarbans, and there is the main pain point area because artisans or beneficiaries, we may call them, they are always say that looking for honey means looking for tigers, because
the 15 days of the process of the procurement of the honey or collection, you may call the collection of honey. This is very important for them because this is very risky job. Next slide. If the collection, they are saying that if the collection is good, say about 1 quintal per head, they can easily earn 15,000 to 20,000. But this year onwards, previously that was not possible. And also, again, regarding of that, after our intervention, each and every honey collectors are going code forest with the proper license and forest department pass. That is the proper legal process with proper providing training with the help of forest department also. Next slide. This is the traditional method in the Sundarban. There is a maximum, the honey is collected by squeezing in the honeycombs. As a result, the honey contains impurities like dirt, pollen, body parts, wax, particles, etc. And bee wax is mainly kindly thrown away. The quantity and quality of the honey collected deteriorates. Next slide. After our intervention, brief intervention through the firstly support to the State Division, GST Government of India, and later the KVIC, that is the Khadi Village of Industries Commission under the MSME Government of India. We have developed on providing many awareness and training program, enhancing the honey production without disturbing the natural balance, and at the same time collection of honey from the honeybee colonies with following objectives, that is the enhancement of quantity of honey, improvement of quality of honey, and also the main important point is avoiding the colony losses. Next slide. That is the scientific methods, that there is no destruction of the comb or the fresh filled brood. Fresh filled brood means that is the early stage of the bees, and the development of the comb continues. As a result, repeated collection of honey from the same colony. There are no colony losses, and that is the result of sustainable harvested from rock bee colonies. Next slide. That is our technology flowchart. We have the skill upgradation, training, kits distribution, a smoky environment. Initially, we have a processing plant that 300 kg per day production is our limitation. Next slide. Yes, this is our deep intervention. We have a total artisan involved 365 directly in our organization, or you may call the Sundarban beekeeping cluster. We have many of the welfare measurement undertaken, insurance, because insurance is a very good important part because they are going to the jungle. So 500 already we have insurance covered, and with the help of NBIRT, we have installed the micro solar dome installation 275 as well as boat and as well as the house. Next slide. That is our 754 banks account have been opened, and also the cooperative society Sundarban Honey Producers Cooperative Society is formed, organizing the honey collectors. At the time of honey collection point, we collect the honey and taste the honey and the spot as per the quality specification. We have received the parameter and send the money to their account. Next slide. This is the impacts of HIP intervention because before the project of the implementation to the artisans, their maximum price 7 to 80 rupees per kg from the middleman. And during our intervention, the 10-year project of the artisan, the 150 to 180. Also, the government, the forest department also helped to us to increase their charge. There is a 75 to 125. Next slide. Yes, this is our capacity building. We are providing the training, awareness, and how to collect the honey from comb or as well as the bee box. Next slide. Yes, this is the before that I have just introduced of the wild honey, and now I have just introduced a little bit of the beekeeping, because beekeeping is a very important part, and we have already providing the beekeeping technology to the Sundarban women. And there is a pollination is there, and lots of things is there. Just just livelihood as a why livelihood stands, because unemployment youth can start this business with minimum funds, that is 1 lakh to 2 lakhs, and generate 3.75 lakhs mandates to maintain 10,000 bee colonies in beehives. And income from 100 bee colonies is around 2.5 to 3 lakhs per annum. May help the doubling farmers' income by supplementing or by complementing agriculture or horticulture. And it also helps us to rural development and promote
small village industry. So the encouraging beekeeping, encouraging biodiversity. Next slide, please. This is our common facility center where the process is going on, and we also have one community participants. We can interact with him also after the finish of the presentation. Next slide. Yes, this is our Vivek honey, and these are extracted from the only for sealed honeycombs and qualifies as a FSSAI Roca organic standard. We have just 1 year back, we have just affiliated, that is the organic certification from Roca agency. Next slide. This is our honey parlor, and also we have one honey clinic under the Ayush department. We have maintained the clinic also. Next slide. Yes, under the marketing and promotion, we have one exhibition van for the awareness of the artisan as well as the school students for how the important is beekeeping in Sundarban area. Next slide. Okay, this is the gaps identified, or also we can say the systematic gap. That is the linkage with Food Technologies Institute for honey testing as per the international standard and other value-added products from honey as well as the beekeeping. Here we need to create that. Devpriya sir also said that we need a SETU, because as the earlier presentation we see that like the KK Singh, that is the IMD, okay, because we have also the Vivek mobile app for agriculture information providing, or Mr. Shubhendu sir for satellite remote sensing of agriculture. Ghungru technology is also there, and most important in Dr. Renu Agarwal madam for improvement betterment of our service. So here we can interact with them also. Next slide. Yes, that is always we have say that there are more technology available on adulteration than honey making. So our main objective is to only for focus on the purity. Next slide. Okay, this picture was from the Honorable Minister Dr. Harshavardhan sir was visited in Sundarban area and interact with the our honey collectors also. And last again, I also telling that again our respected sir Ashutosh sir was saying on 15th October that I remember that skill or information provide to allow them create their meal, but not provide the meal. Yes, we are always follow the values, and we connect NGOs and self-help group and also creation of master trainers. So that's why. So that is our presentation. I just informed to sir also, please. Hello. 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 Yes, Dr. Datta, we can hear you. I believe the presentation is just wrapped up. Yes, we have wrapped up. Just I would like to add that this honey technology program we have started with the help of Department of Science and Technology only, and the linkage with them, that is from the time of Kamala Kumar, many scientists they have helped us. And the beauty of this program is that Sundarban is having around 500 metric ton potentiality, but out of that, not even you can say that half of it is exploited. So if we can do the technology intervention at the same time social engineering properly, the whole thing can be exploited. At the same time, the community will be getting the benefit properly. And I'm really sorry that I could not join because of the technical problem. Thank you. Thank you very much. Not at all, Dr. Datta. Thank you so much to the VIB team for an excellent presentation. And we did get to hear very much about the technology. So thank you so much for your time and for your participation today. We'll now move to a set of 3 different startups that are going to be making presentations today on how to advance rural livelihoods through the use of innovative technology. अब गांव से ग्राहक तक जो जरिया होता है उसको हम कैसे मजबूत करें, किस हद तक मजबूत हो सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. इस मामले के बारे में बात करने के लिए we currently have today Mr. Purval, who joins us from White Gold Technologies LLP. He'll be presenting to us on eliminating milk adulteration. So while I think the DST team has just loaded the presentation,
Mr. Purwal, if you should like to start, we'd appreciate that very much. We also very much appreciate the VIB team, more or less sticking to time limits. That is very considerate of them. If we may request that from you as well, Mr. Purwal, we'd appreciate that. Thank you so much. Sure, sir. Thank you very much, sir. I hope I am audible. Yes, we can hear and see you. Thank you. Okay, great. So thank you once again for the opportunity of considering us to be a part of an excellent program. And I would definitely try to stick to that 10 minutes timeline so that everybody will get an ample time to present in the best way. So to start with, I'm representing Whitebolt Technologies, LLP, and we are a startup which is catering to the dairy tech, I would say. So to start with, we have recently been conferred an award by the animal husbandry into the category of eliminating milk adulteration, and this is for the product that will be deep diving for the milk collection. Our vision is to be one company which can basically enhance the dairy farming, milk societies, milk union, and dairy plants with cost-effective and innovative solutions. And our mission is to empower dairy farmers and connect the dairy value chain with the combination of physical and digital technologies. Now I would like to introduce to. I'm sorry. Can you move ahead with the slides? Yeah, I lost it. Yeah, so this is where I informed that we were the winner of Animal Husbandry Startup Challenge. So this is the Twitter post by the Animal Husbandry, because being into the lockdown, they couldn't have any ceremony as such. So this is the certificate or an award which has been declared. So can we move ahead? Yeah, we can skip this slide. We can go ahead. I just covered vision and mission statements. Yes, perfect. So this is the robotic milk collection unit that I was talking about. This is something just to give a brief. We commenced this company in 2016, and we started developing this product. Since our founders have more than 10 to 15 years experience, individual experience into dairy segment, we found this milk collection as a process requires a kind of support from the technology to take it to the next level, because we are talking about the digital form of payments these times. So we also wanted the process of milk collection to get into digitally with the independence to the dairy farmers. So we designed a kind of a kiosk just on the basis the idea like our cash deposit kiosk, cash deposit ATMs. So on basis of that, we created these milk deposit ATMs, wherein we combined the tabletop or the benchtop equipments which is used for milk quality checking, like weighing of the milk, the quality parameters, how much is the fat, SNF, lactose, and other things, as well as the adulteration detection. Because as Mr. Mittal in his presentation rightly touched on a lot of challenges of milk farmers, that yes, there are some very good farmers, but then there are certain farmers which are doing certain things and taking away the main profit out of it. So milk adulteration is definitely a challenge in this era. So with our machine, we 100% we check 100% milk, not only on milk quality parameters but also the adulteration detection, which is currently not the right process. Currently, the milk adulteration is checked only randomly. So this is another benefit. We can cover it ahead. Can we move ahead? So just to give what is the current process of milk collection, that a dairy farmer arrives at a milk society with the milk and whatever container. They have a certain unique numbers assigned so that they can identify a farmer. The farmer pours the milk in a pouring bowl
which is kept on a weighing scale. And this sampler draws 50 ml of the milk sample while the milk is being poured. This sampler use this particular 50 ml of milk for the fat SNF testing. A printed receipt is generated for whatever the farmer due, basis the fat SNF and weight and the rate chart of the dairy. And the actual payment is made to the farmer maybe on the same day or T+7, T+14 day. So this is the current process. So can we go ahead? So here, if you see again, the milk adulteration detection is not a part of the process. It is a random thing. So just to deep dive into our product, how it looks and what it does. So this is a home screen where a society can see how much cow milk has been poured, how much buffalo milk has been poured, how many total milk has been poured, and how many members, how many farmers have poured. So this is the basic screen they get. The moment there has been any addition to it, the numbers will be changed. Yeah, can we go to the next slide? So the process is that you see one lady which is coming to the machine, and she is identifying on the first image on the top left hand side. She is identifying herself with the RFID card. So once we identifies her, then the machine would ask her to select the cattle, whether it is cow or buffalo. Then she selects the cattle. Then the machine will prompt her to pour the milk, where you can see on the bottom left hand side screen the milk is being poured. And on the right hand side of the bottom, you will find there is an analysis which is being done on the milk which is poured. Yeah, can we move to the next slide? Yeah, so just to give you the screenshot of what actually happens. So what you see is a society card. So instead of that, that would be the farmer's name, the member ID, his historical data collection of last few pourings, what he has done. Also, what he has to select, the farmer has to select between a cow milk or a buffalo milk. Plus, he gets two options to print a milk with the more options, he can click a button and call for a veterinary. So a veterinary will get a notification in whatever area he is assigned to. So the veterinary call can be, they can call for a veterinary. They can click a button and call for a loan. So since we have all the data of the farmer, his pouring records and everything. So just like what we have this CIBIL records, a kind of CIBIL records can be come out. Can be the system can give you the past 6 months, 3 months, whatever data of that particular farmer, and you can come up with some number. So that is for the banking, if that is the scenario. Yeah, we can move ahead. This is a notification for milk pouring. For example, if somebody is not really, they cannot basically read, then there is a system notification of pouring of milk from the can. So the farmer will get to know, yes, this is the time to pour the milk. Yeah, we can go ahead. Yes, now this is the time where the milk analysis and adulteration detection will take place. So it will take 20 minutes to detect the quality and also the adulteration. So in that 20 seconds, we can play some video where it could be an advertisement for some other, for example, allied products. It could be some directive to the farmer from the dairy, from the government. It could be it could be any promotion of the fertilizer or cattle feed or anything like that. That could be used in this video. Hello. Yeah. So this video can be used for that, for promotional, as well as any notification that we need to give it to the consumer or to the dairy farmer. And since he will be standing there to know the analysis, so you will get full time of him looking at that screen.
and it is audio as well as visual. So we can have this both the things catered for this 20-second window. Yes, we can move ahead. Now this is the screen where you can see entire details of his milk quality is shown on the screen, which is fat, SNF, added water, quantity, density, lactose, protein, temperature, everything. And if we go ahead, can we go ahead? So in this screen, you will see it is rejected. Why? Because probably the fat percent is 0 or SNF percentage is 0. Or we can have a cap here on fat and SNF percentage if the dairy wants. Because if in case if the dairy says the minimum requirement for fat percentage is, let's say, 3, if anything below the 3% of fat it is not accepted, then we can have this provision. But in India, generally for the cooperatives, they are under direction that they have to procure whatever the quality of milk has been given by the farmer. But yes, there are certain demands from the private sector. For there we can use this. Another thing is the milk will also get rejected in case there is any adulteration detected in the milk. So if it is rejected, the screen will show rejected. And the beauty of this machine is the milk is basically it holds under one area, and then it is analyzed. And before it goes into the tank, it in the hold area itself there is a provision that the other way around there is a valve which will basically take out the rejected milk, and again the CIP would also be there is a provision of automatic CIP to clean the sensor and the bowl, so that whatever are the residues of the milk are cleaned. Yes, we can go ahead. We can skip this and we can move ahead. Yes, thank you. So these are the salient features of RMCU. We have the automatic sampling. So we don't require any manpower to do this sampling of 50 ml milk, which they are using it now. Because this 50 ml milk, what they take out is never given back to the farmer. The society, milk collection society, use it and they make money. So imagine there are 200 farmers coming to a society, and for every farmer they are taking 50 ml. So and it happens twice a day, morning as well as evening, every day, 24 hours. There is no holidays in milk collection. Second thing is analyzes the milk for weight, fat, and SNF as well as adulterants. It only uses 5 ml of sample against 50 ml. The milk analysis along with adulteration testing is within 35 seconds. The entire transaction. Separate channel rakha hua hai for I'm sorry, I haven't used both the languages. So we have the separate channel for accepted and rejected milk. हम accept और reject दोनों, जो अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिले उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अलग चैनल बनाया हुआ है ताकि वो मिक्स ना हो. एकदम सीमलेस ट्रांसफर होता है मिल्क का. जैसे ही अपने डंप टैंक पे बीएमसी अपने जो मशीन से जो एक्सेप्टेड मिल्क आता है वो एक डंप टैंक में आके जमा हो जाता है, तो उस दूध को सीधा हम बीएमसी में ट्रांसफर कर देते हैं. बीएमसी यानी मिल्क चिलर होता है जहाँ पे दूध ठंडा होता है. तो उसके लिए किसी को भी वो दूध उठा के कहीं पे डालना नहीं है, मिल्क हैंडलिंग नहीं करना है. जितना कम हैंडलिंग करेंगे उतना कम चांसेस होंगे एडल्ट्रेशन के, या और उतने कम चांसेस होंगे स्पिलेज के भी, बिकॉज स्पिलेज के कारण भी काफी दूध का नुकसान होता है फॉर द कलेक्शन सेंटर. तो ये डैम टैंक से सीधा हम मिल्क चिलर में ट्रांसफर कर देते हैं. इसमें बिल्ट इन ऑटो सीआईपी है, बिकॉज मिल्क एनालाइजर का क्या होता है कि कुछ समय बाद वो एनालाइजर प्रॉम्प्ट करेगा आपको कि इसमें जो एक परख जम जाती है प्रोटीन की बार बार उसको यूज करने से, तो उसको एक न्यूट्रलाइज करना पड़ता है. बट वो मैन्युअली होता है बिकॉज वो बेंच टॉप होता है. अभी हमारा एक ही सिस्टम के अंदर सारा चीज आ जाता है, तो वो ऑप्शन नहीं है. इसके लिए हमने ऑटो सीआईपी डेवलप किया. थोड़ा सा वक्त के बारे में बात करना चाहते थे. इफ यू कुड जस्ट कीप एन आई एंड स्लोली इफ वी कुड रिक्वेस्ट टू बिगिन टाइम सर, जस्ट 2-3 मिनट में अगर आप कर सकते हैं. श्योर, आई विल डेफिनेटली.
सो इससे पूरा क्लीन हो जाता है द सेंसर। इसके बाद आगे जो डेटा है, यह हमारा एपी अपना एंड्रॉइड का ऐप है जो फार्मर भी यूज करता है, कलेक्शन सेंटर भी यूज करता है और डेयरी भी यूज करती है, और उनको सारा सीमलेस सारी चीजें दिख जाती है क्या हो रहा है दूध के साथ अंदर। इसके बाद आता है जो फार्मर होता है उसको कलेक्शन सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता कि जब दूध सैंपल ले रहा है तो ऊपर से ले रहा है नीचे से ले रहा है, ये ऑटोमेटिक होता है, तो इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन फॉर द वीडियो, जैसा मैंने आपको उस टाइम पे बताया। और फार्मर्स की सारी जो पेमेंट डिसबर्समेंट है, ये पूरी की पूरी सिस्टम के थ्रू आपको पूरा डेटा बना के मिलता है। हम आपको बैंक के साथ इंटीग्रेशन करके भी दे सकते हैं ताकि आप उनका डिजिटल पेमेंट करवा सकें। यस, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द बेसिक कंपैरिजन। फैट एसएनएफ तो दोनों ही जगह होता है। एएमसीओ ने जो करंट बेंच टॉप सिस्टम है, आरएमसीओ जो हमारी प्रणाली है जो हम लोग ने सब कुछ एक साथ बनाया हुआ है। इसमें मिल्क डिटेक्शन कर सकते हैं, मिल्क सैंपल ऑटोमेटिकली ड्रॉ होता है, सेग्रीगेशन होता है खराब और अच्छे दूध का, ऑटो सीआईपी होता है, और फार्मर्स को विजुअली ऑडियो विजुअल सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एडल्ट्रेशन से यूरिया, सॉल्ट, डिटर्जेंट, सोडा, अमोनियम सल्फेट, कॉस्टिक सोडा एज वेल एज वेजिटेबल ऑयल विद सम एमल्सिफायर्स जो डालते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेक्ट कर लेते हैं। We can move to the next slide. I'll just conclude. Yes, so these are the milk testing parameters जहाँ पे फैट, एसएनएफ और बाकी जो चीजें जो लगती है वो सारी चीजें आ जाती है मिल्क टेस्टिंग में। We can go next. We can skip 2 slides and we can move ahead. This, next. So this is some of the reports which are already built in. जैसे ये फार्मर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है जिसमें सारा आपको लिखा जोखा मिल जाता है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से। नेक्स्ट, दिस इज फार्मर, उसमें उसको ऐसी वाली प्रिंट मिलती है ताकि उसको पता चले कि क्या क्वालिटी का मिल्क उसने दिया है, कितनी अमाउंट उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, ये शिफ्ट समरी से ये सारी रिपोर्ट जो है ये सारी ऑलरेडी बिल्ट इन है, ये आपको पूरी रिपोर्ट दे देता है। नेक्स्ट, this is a daily collection report. So I would conclude here with my presentation कि ये जो मशीन है ये अभी अमूल डेयरी में और साउथ में जो केविन केयर है वहां पे यूज किया हुआ है और अभी काफी लोगों ने इसमें डिमांड की है। There are lot of things which we can do with the structured data that you get out of the system. So we are open for any collaborations ahead, and I really am thankful for the organizers to giving us an opportunity, and thank you for your time, sir. Thank you so much, Mr. Purval. There's just before we move to the next presentation, I wanted to also draw your attention to a question that Dr. Datta had about the price of RMC and how an NGO or a community organization can access it. तो जमीनी संगठनें जो हैं वो कैसे प्राप्त कर सकती है और दाम क्या होता है आपका यूनिट का? राइट, सो हमारे पास सर 3 मॉडल्स होती है, 25 लीटर, 40 लीटर और 50 लीटर की। इसमें एक बारी में हम कितना दूध एनालाइज कर सकते हैं इसके हिसाब से ये मैक्सिमम लिमिट्स लिखे हुए हैं 25, 40 और 50 की। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 25 लीटर की 3.5 लाख, फिर अपना 40 लीटर का 4 लाख और 50 लीटर की 4.5 लाख, जिसमें आपको फैट एसएनएफ एनालाइजर आता ही है, उसके साथ में एडल्ट्रेशन एनालाइजर भी आ जाता है। और इसके लिए जहाँ पे जो सोसाइटीज में उनको पैसे की थोड़ी मुश्किल हो, जहाँ पे उनको फंडिंग नहीं मिल रही हो, तो उनके लिए हमारे पास एक और मॉडल है जहाँ पे वी कैन वर्क ऑन EMI बेसिस या पर पोलिंग बेसिस, सो दैट दोज मॉडल्स कैन बी वर्कड आउट। सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे वी कैन वर्क आउट, जिनको पूरी की पूरी लागत अगर जिनके पास अवेलेबल ना हो। Thank you so much, Mr. Purval. Much appreciated. Thank you for your time and thank you very much for your presentation and the very interesting technology.
that you've shown today. We'd now like to invite Mr. Pratik Datta, also from a startup called Bioreactor. The startup's working on portable bioreactor technologies for aquaculture, which we know is essential to rural value addition, particularly to try and boost farmer incomes in a number of different geographies. My DST colleagues have just put the presentation up. Mr. Pratik Datta, would you like to please start speaking? Again, I'll kindly request you just keep an eye on the time, please, so that we make sure that PondBot, who will be speaking after you, also has some time to be able to speak. Mr. Datta, if you can hear us, please do start. Hello, can you hear me? Hello? Yes, yes, my name is Pratik Datta. You're audible. Okay, I am starting. My presentation is on portable bioreactor for aquaculture. Next slide, please. Yeah, first we have to know what are the general types of aquaculture practiced in our country. This is the normal aquaculture, which is generally where the aquatic organisms are raised in aquatic ponds, and means natural bodies of water, maybe coastal areas or inland ponds and lakes, and the entrapments which you see over there are where the actual organisms are reared. And this is the RAS aquaculture, which is the recirculating aquaculture system, in which the organisms are raised in a much controlled environment with very, very high level of filtration. The yield for RAS aquaculture is very high, and today there is a need for RAS aquaculture because RAS aquaculture needs very less land and very less water to give a very high yield of fish. And then we go to biofloc aquaculture. So in biofloc technology, it's simple. A carbon source is added in the artificial ponds so that the heterotrophic, and because of the carbon source, heterotrophic bacterial growth is stimulated and nitrogen uptake through production of microbial proteins takes place. My project generally focus on small to medium scale RAS system for ornamental aquaculture as well as normal aquaculture. We can go to the next slide. Value parameters for RAS and biofloc system, I got it from a paper, the reference is given there. The general, you can see ammonia nitrite and nitrate. Here the nitrate is 96 ppm, CW is actually the RAS system, and biofloc system is 38. Now we have to understand that in these two systems, very sensitive species like marine invertebrates and very sensitive marine species, it is difficult to cultivate. Go to the next slide. Another problem which is facing in our country and worldwide is problems with the ecosystem. Coral reef ecosystems are a major part of ecology of our planet, and coral reefs are in danger also from physical damage, from pollution that originates on land, overfishing, coral harvesting, and increased ocean temperature, especially global warming. Increased ocean temperature means that. And I have made a coral reef ecosystem in a small aquarium, which you can see over there, and the other picture which you can see is a natural coral reef in the sea. Now, coral reef ecosystems are going down, and the problem, and we have to see that the coral reef ecosystem not only produce food for millions, it also protects coastlines from storms and erosions and provide habitat, spawning nursery grounds for economically important fish species. Right. My bioreactor can be used in preservation and culture of corals and highly prized ornamental reef fishes in a small scale setup. We have to understand these. Here, next slide, you can go. Next slide. And problems faced by current filtration system is, you can see the biopellet reactor, which is shown. The biopellet reactor works in conjunction with actually the protein skimmer, and the carbon, it is actually adding a carbon source in the water, which removes mainly nitrates at a very high level, but does not remove phosphates at a very high level, though it removes in a very small quantity. Then is the ozone reactor. This is the ozone generator, to be exact. The ozone generator actually breaks down organic compounds and cleans the water from the yellowing of the water, but it does not generally remove nitrates and phosphates or contribute to the biological cycle. And then the external canister filter is there, and which does not reduce nitrates and phosphates. It generally converts ammonia to nitrates. And then there is the granular ferric oxide. The granular ferric oxide generally absorbs phosphates and removes it, does not remove nitrates. And the reactor, and the problem with GFO and the biopellet reactor is media has to be replaced after a few months. Next slide.
And the problems by the another is that the packed bed bioreactor, which is shown over here, the packed bed bioreactor actually, which is in our country present, it's a company which I found. What happens is that it also reduces nitrates, and it reduces ammonia to nitrate, and then also removes nitrates. But they also said that they have no data of that they can reduce phosphates at a very high level. And then this zeolite reactor, which also again the media has to be replaced, and ions in the sea affects the removal of ammonia in a zeolite reactor. Zeolite reactor generally removes ammonia and does not remove phosphate at a very high level. We can go to the next slide. The bioreactor, this is a diagrammatic representation of the bioreactor. This bioreactor actually removes nitrates and phosphates simultaneously, including ammonia and nitrite at a very high level. And what I found that the bioreactor before application, the nitrate level was 80 ppm and the phosphate level was 7 ppm. And nitrate after application means after application of the bioreactor, the nitrate level went down to 15 ppm and the phosphate level went down to 0.25 ppm, salinity being 35 ppm. And the most important thing is I fed the fishes 5 times a day, and water changing, I did not even change the water. It was reef ecosystem for 1 full year. In a small 454.25 liters of water, and it was actually an aquarium of dimension 4x2x2, 17 specimens of invertebrates and 7 specimens of fishes were kept, and the bioreactor worked 24/7 without stopping, and it only consumed 20 watts of power. We can go to the next slide. Now, the important thing is the cost. This bioreactor can not only to be used to culture, means for aquaculture, but also these bioreactors can be adjusted in parallel, one after the other, means in parallel, to increase the capacity to treat large scale of water. A single unit, installing a single unit will cost only around 25,000 rupees, and all the multiple 8 units with the water tank and everything will cost around 85,000, which is a fraction of the cost of the total RAS systems. And this system can significantly support very sensitive species like corals. And the one most important thing is, let's say a villager or any person in the backyard can culture them. And the important thing being the corals and these reef fishes or ornamental fishes are very highly priced. For example, there's a fish called yellow tang. It costs around 6,000 per piece, and it is in demand. So we can also export it, right? But it can also culture fishes like silver pompano in a backyard culture if a person wants it at a very low price, initial investments of only 85,000. We can go to the next slide. This is the picture of the actual reef ecosystem which the bioreactor supported. It's a detailed picture. 17 specimens of invertebrates were there. We can go to the next slide. It's just a picture to show. And this is the general of the invertebrates, which the close-up of the invertebrates. We can see a very important thing which the invertebrates signifies. The invertebrates were in good health, but the invertebrates are very sensitive to the water parameters for pH fluctuations, everything from pH fluctuations to temperature to alkalinity, anything you say, and especially nitrates and phosphates. Ammonia, it will just kill them. So if they can survive in this ecosystem supported by the bioreactor, any fish species can easily survive, because fishes are much more tolerant than simple means these invertebrates. We can go to the next slide. Now, some of the features of the bioreactor as compared to other filtration, you can see over here. Like I did not change the bioreactor media for full 1 year. So it really doesn't need to be changed. And there is no risk associated with the bioreactor. If it even fails, nothing is going to happen. The bioreactor can be used in both fresh and saltwater system. Means if someone wants to use a first freshwater system and then turn it into a saltwater system, so be it, no problem. No activation of the media is required. A bioreactor can reduce both nitrates and phosphates simultaneously at very high rates, including ammonia and nitrite. We can go to the next slide. And we also see the global biofilter market is worth $1.8 billion. And
The global ornamental fish trade is estimated to be more than $15 billion. But the most important thing is ornamental fish trade plays a very important part in alleviating poverty in developing countries. And coastal and riverine communities are able to utilize ornamental fish, which can be sustainable and renewable source as a source of income. We can see the number of just ornamental fish shops in some of the cities, which is stated in the table. And there are a huge number of cities. And I have talked with many of the people from this ornamental aquaculture as well as aquaculture, especially ornamental aquaculture. They have the same complaint. They do not have a very sufficient good filtration unit to clean the water, be it marine or fresh water. And because they all rely upon Chinese goods. Chinese goods are of very low quality and they are not reliable. And the European varieties are very expensive, right? And I have also observed that there is generally no filter in the market which can reduce all these, including nitrous and phosphate, at a very high rate. We can go to the next slide. Now, I would be generally selling this product directly to the various distributors, and a national government institute is already interested in the product. But I have to say, my product, what I did was actually a prototype I built. I am in the development in the second iteration of the prototype, and any help would be welcome from DST. And this prototype, actually, we can go to the next slide. Now, IIST is a central government institute. This central government institute, okay, I'm answering the question. The central government institute, what they did was they are going to do research in coral reef ecosystems. So they were searching for a very economical solution to help them out. So they saw this bioreactor, I explained to them, they are very interested. So after development, they would use in their research too. And there was the US company too. So he told me that they did not find similar product in their market. So it has a good export options too. We can go to the next slide. This is a very important letter. The reason being, I talked with this person for a long time, and he expressed that he really wants a system which is indigenously developed, which is very small and portable, so that he can use it in his aquaculture to further improve his aquaculture techniques. He's actually importer and exporter of ornamental fishes, so he would really like to distribute it as well as accept this technology. We can go to the next slide. It's almost done. This is what my team is. This is me. I would be the ecosystem and bioreactor designer, and Dr. Prasanthanaratna would be operations, logistics, and project management. How we can use the water from drainage line for aquaculture, algae plants, etc. This resource is omnipresent. Means what exactly can someone elaborate how we can use water from drainage line for aquaculture, algae plants. Hello. Hello, we can go to the next slide. It's almost done. It's finished. I have finished it. It's like 10 minutes. Can someone please elaborate this? It would be very helpful. Perfect. Thank you so much, Mr. Datta, both for a very informative presentation and for very interesting technology, and for clarifying this question, and for clarifying the question, and indeed for for Ms. Crispin sticking very much to time frame. Someone asked me, Dr. Soham Pandey asked me a question. If you can elaborate his question, it would be very helpful. So, I would really sorry, Mr. Datta, to interrupt you. We actually have a Q&A session that will follow this. The Dr. Devapriya Datto from DST. Okay. At that time, I'm sure he'll pick it up. We did this yesterday as well. Thank you. Thank you. Dr. सोहम पांड्या जी, अगर आप ये सवाल जो है आपका, हम उस वक्त हम उठाएंगे और उस वक्त हम इसके बारे में बात करेंगे. थोड़ी एक और आखिरी प्रेजेंटेशन है, उसके बाद एक Q&A सेशन है, उस समय जो है हम इस पे बहस कर सकते हैं. If I could now kindly invite the final presentation in this particular panel. This is from Mr. Mohit Kumar, Upay Engineering, who's developed something called PondBot. It's a device for shrimp and aquaculture. My DST colleagues have just put the presentation up. Mr. Kumar, if I could please request you to start, and then again, as your predecessors have done, if you could please keep an eye on time, that would be great. Yeah, can you hear us? Yes, I can hear you, Rahul. Great. All right, please proceed.
Please do keep an eye on time if you can, and then we'll have a Q&A Sure. session. गुड इवनिंग। आप हर 15 मिनट में नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न एक्वाकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट फीड एंड एरेशन, सॉरी, right now we as a country are heading in uncertain direction. The biggest issue आज के यूथ के लिए unemployment है, and it is only going to get worse because take aquaculture as an example, जहां 100 फार्मर्स, एवरेज फार्मर्स लगते 1000 टन प्रोड्यूस करने के लिए, एक कमर्शियल फार्म एम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजी, हाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज लाइक RAS सिस्टम और एसवीएच कैन इजीली प्रोड्यूस 1000 टन्स, बट ये 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा। दे विल हार्डली एम्प्लॉय 15-20 पीपल्स। द प्रॉब्लम इज for green water system, production cost was supposed to be lower than RAS system, but because of lack of infrastructure, disease or technical knowledge, equal if not higher than commercial higher production systems, and it does not bode well for a average farmer. Modern aquaculture में सबसे important feed and aeration होता है। एरेशन एयर वाटर डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कोई भी एरेशन सिस्टम पॉन्ड के बॉटम में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, बिकॉज एयर वाटर मिक्सचर हल्का होता है एंड इट रैपिडली राइजेस बैक टुवर्ड द सरफेस, एंड 70% ऑफ ऑल द फीड इनपुट ऑक्सीजन की कमी में ये स्लज ब्रेकडाउन होता है, तो काफी बाय प्रोडक्ट लाइक नाइट्राइट, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये बाय प्रोडक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है श्रिम्प एक्वाकल्चर में लॉसेज के पीछे। अदर देन दैट, पैथोजेनिक जितने भी पैथोजेंस होते हैं, मैक्सिमम ऑफ द पैथोजेंस बॉटम प्रेफर करते हैं। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम एक ऑटोमेटिक सरफेस वेसल बना रहे हैं, जो कि 1 मीटर लंबा ड्रोन बोट होगा, एंड ये पूरे पॉन्ड सरफेस को कवर करेगा, सिमिलरली टू द वैक्यूम, डोमेस्टिक वैक्यूम, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स। एक्सियल पंप लगा होगा जो वाटर को पॉन्ड बॉटम की तरफ पंप करेगा। सरफेस वाटर ऑक्सीजन रिच होता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एरेशन। तो जब ये ऑक्सीजन रिच वाटर पॉन्ड बॉटम पे जाता है एंड मिक्स होता है, इट इम्प्रूव्स द वाटर कंडीशन एट द पॉन्ड बॉटम। उसके अलावा ये ऑक्सीजन रिच वाटर कोई भी रिड्यूसिंग कंडीशंस डेवलप नहीं होने देता और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनारोबिक पॉकेट्स को रिमूव करता है। इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए डिलीवरी सिस्टम वेयर इनपुट्स लाइक प्रोबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट और H2O2 एक टैंक में से पंप इनलेट में इंजेक्ट किया जा रहा है, एंड ये उसको थोरोली मिक्स करके बॉटम पे अप्लाई करेगा। अब जैसे इनपुट्स होता है लाइक प्रोबायोटिक्स, मैक्सिमम स्ट्रेन जो होते हैं वो एरोबिक होते हैं, बट जब हम उसको ऑक्सीजन डेफिशिएंट बॉटम पे भेजते हैं, सो इट्स लाइक सुसाइड मिशन फॉर देम। अगर हम उनको सरफेस वाटर के साथ मिक्स करके पॉन्ड के नीचे भेजते हैं, तो ये उनको थोड़ा फेवरेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ये इनपुट एफिशिएंसी एरेटर का भी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। कोई भी पॉन्ड बोट यूटिलाइज इनपुट कॉस्ट में रिडक्शन देखेगा एंड टोटल हार्वेस्ट ज्यादा होगा। We believe rural India needs a blue revolution, and we are going to do our part in it. Thank you. That will be all. That will be all. Actually, I said कि हर 15 सेकंड में स्लाइड आगे कर दीजिएगा. So, thank you. Other than that, इसको emergency टाइम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, like heavy
Thank you. Sorry, Mohitji, your signal was cutting out. Were you? I think we may miss the last part of what you said. आप फिर से दोहराएंगे क्या आपने जो अभी बताया था? Okay. मॉडर्न एक्वाकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट फीड एंड एरेशन होता है. एरेशन जो होता है वो एयर वाटर डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बट कोई भी एरेशन सिस्टम पॉन्ड बॉटम पे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि एयर वाटर मिक्सचर जो होता है वो लाइटर होता है, सो इट रैपिडली राइजेस बैक टुवर्ड द सरफेस. और मोर देन 70% ऑफ फीड इज वेस्टेड एंड स्लज के रूप में पॉन्ड बॉटम पे सेटल हो जाता है. आर यू हियरिंग मी प्रॉपर्ली? हेलो जी, आपका आवाज साफ आ रहा है. हेलो जी, आ रहा है, अब आ रहा है. अच्छा, जब ऑक्सीजन एफिशिएंसी में ये स्लज ब्रेकडाउन होता है तो काफी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, लाइक नाइट्राइट, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड ये बाय प्रोडक्ट सबसे बड़े रीजन है एक्वाकल्चर में लॉसेज के पीछे. अदर देन दैट, मैक्सिमम पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी पॉन्ड बॉटम पे ही प्रेफर करते हैं. इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वी हैव कम अप ऑटोनोमस सरफेस वेसल, जो कि 1 मीटर लंबा ड्रोन बोट होगा, एंड इट विल कवर द होल पॉन्ड सरफेस सिमिलर टू डोमेस्टिक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स. मतलब इस वैक्यूम पॉन्ड बोट में वैक्यूम की जगह एक एक्सियल पंप लगा होगा जो सरफेस वाटर को पॉन्ड की बॉटम की तरफ पंप करेगा. ना जो सरफेस वाटर होता है वो आमतौर पे ऑक्सीजन रिच होता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एरेशन. ऑक्सीजन रिच सरफेस वाटर पॉन्ड बॉटम पे जाता है एंड मिक्स होता है, सो इट इंप्रूव्स वाटर क्वालिटी एट द पॉन्ड बॉटम. उसके अलावा ये कोई भी रिड्यूसिंग कंडीशंस डेवलप नहीं होने देता है, एंड इट रिमूव्स एनी एनारोबिक पॉकेट्स फॉर्म्ड एट द पॉन्ड बॉटम. उसके अलावा ये रोबोट इनपुट डिलीवरी सिस्टम का भी काम करेगा, वेयर इनपुट्स लाइक प्रोबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एटसेट्रा इंजेक्ट किए जाएंगे पंप इनलेट में, एंड इट विल बी thoroughly mixed and applied uniformly throughout the whole pond. कुछ इनपुट्स होते हैं जैसे प्रोबायोटिक्स हो गया, तो प्रोबायोटिक्स में मैक्सिमम स्ट्रेन एरोबिक होते हैं, and when we apply them to that oxygen deficient pond bottom, it's like a suicide mission for them. लेकिन अगर अप्लाई करते हैं, अलावा इसको इमरजेंसी सिस्टम लाइक इमरजेंसी टाइम्स लाइक डिजीज आउटब्रेक और हैवी रेन्स में भी यूटिलाइज किया जा सकता है विद रिस्पेक्टिव इनपुट्स. Utilizing our product, we'll see a reduction in input cost, and we believe rural India needs a blue revolution, and we are going to do our part in it. Thank you. Can you hear me properly? Yes, we can hear you. Thank you, Mohitji. I think we now reached the end of your presentation. Bahut shukriya. I'd now like to thank you to all the participants and panelists today for their very interesting discussions, all on a very important theme. I should now like to kindly invite Dr. Debapriya Dotto, who's head of SEED at DST, to initiate the open discussion and the Q&A session to explore a futuristic roadmap for strengthening technology partnerships within communities. Sir, I'd like to hand over to you now. Yeah, thank you, Rahul. Thank you for coordinating these sessions of this, where we have seen that where the technologies have also been developed at a the local level, and what are the opportunities for upscaling it. I think unfortunately we thought of presence of not many knowledge organizations to forward these collaborations, but unfortunately it is not there, not many knowledge organizations are there, and exactly that is a systemic gaps.
because knowledge organizations feel like when people are talking about that the field level problem, that's not of much of an importance. So this is a problem, and that problem needs to be addressed, and that's the reason that we have launched this Science-Society-Setu this initiatives, which definitely will take it forward, and we definitely believe that these knowledge organizations will understand the value of the bottom-up, the requirement in tune or in response to that, the knowledge development should be there. So I think today's sessions we had a lot of new levels of understandings at the which probably will be the really music to the tune of the people who are committed to the Atma Nirbhar Bharat. We have heard from BAB that how the self-sufficiency for the animal husbandry can be brought in a total integrated way, including the fodder nursery development to the organic inputs, phosphorus-rich organic manure, and the heifer productions, and the improving the reproductive traits, the both value chain. One important thing that what they have is a milk processing plant at ₹6 lakhs, and I think this probably gives an multifaceted opportunity for the Atma Nirbharata at the field level, because many of the I think the startups can take up and then can take it forward, because BEF being a civil society oriented, these things can be taken forward by many of the startups. Many of the knowledge organizations can work to improve its efficiency, and being a cost of 6 lakhs, even we can think of this type of in the local innovation centers where we can establish this type of this type of technology available. Then Dr. Nilkant Mishra, I think, very wonderfully brought out the systemic the gaps from the knowledge to the field, and also he showed that how technological interventions of knowledge, finance, insurance can create 2x times of an opportunity for a fisherman in the field. His Azadi model is the wonderful response, or a wonderful the model of Atma Nirbharata in response to these the pandemic situations. It is of an integrated aquaculture systems. He spoke about Eco Shiksha, the aqua school, and the water health card in conjunction with the soil health card. I think these are all the new ideas I see that they can go and integrate it, and can be, we can from our core support group experience, now we can go to the community as an innovation centers where these innovations came out of the requirement of India, and the strengthen the same. Project Move, which is more nearer to the market, but has very nicely brought it out that the role of technology and the informations, and they have developed that the app, which shows that how all the peripheral knowledge can also converge to the communities, and mostly the animal farmers conditions improvement, and which can be a very nice the tool for facilitating the micro entrepreneurships at the local level, and that could be another good the response of response to the Atma Nirbharata requirement, because after the COVID, the more and more micro entrepreneurships is the requirement, and so from his discussions, we found there is an opportunity from the NGO and the startup collaborations. So this can be a new totally way in the operations of the C divisions operations, and then the VIB or Vivekananda Institute that spoke about that how
the honey testing, for Sundarban honey, gatherers can be improved with the linkage with food technological institutions, and also interactions with the IMD, the Mahalanabi Center for the Crop Forecastings, and with the nutritionists. So this is an integrated approach, which is the need of the hour, where it's not only like a particular livelihood system, but all the livelihood systems, along with the the internal requirements of the people, which Dilkanji very nicely showed that how the system doesn't only addresses the increase of the the income, but also takes care of the nutrition and the health requirement also. What we looked at from this white gold technologies, and Mr. Pratik Datta and Mr. Mohit Kumar, are the technological strength of the Indian startups or the Indian small industry. I think this shows what are the opportunities we can create of the so-called of the technological efficiency within our whether it is aquaculture or whether it is in the dairy sectors for the milk cattle nutrition, because white gold technology is a very nice the technological interventions for the milk cattle nutrition, and probably this is another the candidates to be taken into these local level innovation centers, because the cost varies from 3.5 to 5 lakhs, and which the advantage can be taken in a more of a cooperative way rather than an individual the interventions. So I think overall we find in very good the feel of that what are the technological the strength exists at the the local level of India, and how this can be linked to both the direction. So with our great expectations, we couldn't really find the reactions from the community. I think we need some of the community the representatives to talk about that, what you are talking about, whether really that means value to them. And we have to create also the interest among our research community, because we understand that the development of our research system, so which needs to really be aligned to the requirement of us, and many of the the discussions today, what they have shown, I think it's an eye opener for many of us, that how things should be done in a different and a new way. So with that, I think, do we have Dr. Kinkini? Do you have much of the the questions? I see in the questions here, so I can take some of the questions here itself. Like I see there is a question from Anis of SAID, which talks about the type and management and technology required to develop broiler goat-based enterprises. I don't know, whether people are here. Maybe we can, any one of the experts, if you can respond to that, or we have to take it. Yes, please, yes. Thank you, Anish, for asking these questions. Thank you very much, sir, organizing such a wonderful webinar and this meeting, and an interaction between the scientists and the people who are working in the field. So this broiler production system is actually the type of production system. The goat in our country is reared under the majority of the animals are reared under the extensive management system, that is the grazing based. And this stall fed, or we can say that it is a industrial production system under this broiler production system takes place. This is actually basically for the meat production. So, CIRG has developed many technologies for such kind of production system, and we are focusing on that. We always suggest to the farmers, you just decide that what kind of breed demand is there in that area,
Then ICAR CIRG also developed this health calendar in which vaccination schedule is there, deworming schedule is there, and housing and feeder designs which are low cost and can be replicated in many places and under different management system. And we are also formulated that nutrition strategy, particularly that the feed for the broiler production systems. And finally, it is very, very important that since that 80% goats are reared under the extensive management system, and buyers are always trying to get a cheaper goat, particularly that the butchers and other actors who are involved in that value chain from production to ultimate consumer. So at that time, that market for these kind of goats and commercial प्रोडक्शन के लिए मार्केटिंग का लिंक होना सर बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमें अच्छे बायर्स को डिस्कवर करना, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन दैट प्रोडक्शन. और एक्सटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम में जीरो इनपुट बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम है, तो द फार्मर्स आर रेडी टू सेल एट 3,000 to 4,000 रुपी. बट इन द केस ऑफ दैट कॉमर्शियल गोट फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. तो सर हमको एक कॉमर्शियल एज पर हमको गोट को सेल करना है और उसके लिए एक अच्छे बायर्स को डिस्कवर करना है. ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर ब्रॉयलर प्रोडक्शन सिस्टम में. तो अनीश जी को मैं सर वो सजेस्ट करूंगा कि CIRG is organizing training programs in 6 training programs in a year, और we are focusing on the commercial goat production के ऊपर हम लोग करते हैं. और अगर अनीश जी and other colleagues who are interested in that commercial goat production के farming की training के लिए interested हैं, so they can approach us through our website. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Thank you. Your the questions का answer आपको मिल गया है. और अभी Dr. Sonam Pandya raised the questions. This was about how can we use the water from the drainage line for aquaculture, alga plant, and this resource is omnipresent. I think this was directed towards. I think this was for Pratik. Mr. Yes, Pratik yes, Datta. yes. Yeah, Yes, it was directed towards Mr. Pratik Datta. So, Mr. Datta, Yes. can are you in positions to answer that, please? Yes, yes. Actually, if you can elaborate this, for example, there is no effluent going out of the system in my aquaculture, means in the system which I designed, right? There is no effluent going out. The water is contained and it need not be changed. This is the thing. And if you are telling that how from generally, where is the question? Yes, how we can use water from drainage line for aquaculture if the water has to be treated separately with the help of this bioreactor. With the help of this bioreactor, is that any drain means water which is effluent has high nitrates and phosphates. This can be easily removed with the help of this bioreactor, and the algae and plants and etc. can also be removed and later utilized for other purposes too. Okay, yeah, thank you, Mr. Datta. I think there is a suggestions from HRG Shimla, and this shows the the strength of this cross bridging. When BAF presented the livestock related technologies, HRG Shimla responds that these technologies are wonderful and needed to in mountains of the Indian Himalayan region, especially in the Himachal Pradesh, to strengthen livestock activity, which otherwise are declining. And also his suggestion is that the milk ATM, this is a fascinating the concept can be demonstrated in some of the milk clusters of the Himachal Pradesh. So this is the way the cross bridge collaborations can take. And we really appreciate the HRG Shimla for this suggestions, because that's the way things happen. So now I think whatever is here, like now I request, I don't know whether Dr. Anil Joshi is here. I am here very much. I have been raising hand for the last 10 minutes. No, because I can't see I can see your hand. That is I don't know if the manager who can do that. Those are managing it. Because well, I've been raising. Haji, yes. Ketki ji, namaste.
मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ, दो तीन बातें कहना। Am I audible? सुनाई दे रहा हूँ? हाँ जी, स्वागत है, बताइए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमको दो तीन चीजों को बड़ा था ध्यान में देना है। एक बड़ी बात तो ये है कि ये बड़ा सवाल देश में आत्मनिर्भरता या ये उनके लिए ज्यादा बड़ा खड़ा हो रखा है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। वही सबसे बड़ी चुनौती है इस देश में। 20% बड़े फार्मर हैं, वो एवरीथिंग दे कैन मैनेज। 80% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर अवर चैलेंज। और इसलिए ये जो आपके 2 दिन की ये सीरीज है, ये इसलिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स इश्यू ऑफ सप्लीमेंट्री इनकम, कि उसके एक स्मॉल होल्डिंग के बीच में, एक दो कैटल के बीच में, एक दो छोटे मोटे काम के बीच में वो और क्या ले सकता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। एंड अभी आपने जो 2 दिन, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आपके इस पूरे कार्यक्रम में, एक दिन आप साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूट्स को बुला रहे हैं, दूसरे दिन सिविल सोसाइटी को। फिर भी दोनों अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए जो सिविल सोसाइटी के द्वारा किए गए प्रयोग है उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। उसका एक तो आपका रेलेवेंस ज्यादा होती है क्योंकि वो गांव के बीच में से ही उठते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके जो लिमिटिंग फैक्टर हमारे, जिन्हें हमें समझना चाहिए, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो ये हमारे कहीं पे लिमिटिंग फैक्टर हो जाते हैं। जैसे मैं एक दो प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि जिसमें कि 25 लाख की कॉस्ट है या उसकी कॉस्ट है, एंड जैसे अपना प्रतीक जी का भी है प्रोबायोटिक्स वाला, ये अच्छे हैं जिनकी आज बड़ी आवश्यकता, बट वी नीड टू गो टू दैट लेवल, द नेक्स्ट वन। बट लेकिन अब जैसे 2 बड़े अच्छे, बायफ का बड़ा अच्छा अपना जीव अनुभव है एनिमल हस्बेंड्री को लेके, और उन्होंने जो इंटरवीन किया है वो गांव के बीच को लेकर के किया, तो मुझे लगता है जो उनका पैकेज है वो रेडिली हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में डाल सकते हैं। और दूसरा, ये जो जल वाले मित्र हैं मिश्रा जी, जिन्होंने कहा, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीजनली वाटर इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल वाटर बॉडीज, और अगर हम उसको 3, 4, 5 महीने के अंदर भी उस पानी का अगर हम किसी तरह से उपयोग करें, क्योंकि जो इन्होंने जो बातें रखी हैं फिश सीड की जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी बारी स्कैरसिटी है हमारे देश में। वैसे बीज नाम ही बड़ी स्कैरसिटी है किसी भी चीज का हो, लेकिन आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बोला, जल जीवन वालों ने, मिश्रा जी ने, एक वेरी स्मॉल वेरी अप्रोप्रिएट। और मुझे लगता है कि ये हमारे फेज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज अगर हम कभी इन टेक्नोलॉजी को लेने की कोशिश करें तो फर्स्ट लेवल पे शायद ये जानी चाहिए, ये मुझे लगता है। और मैं एक जो सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं वो ये, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपने भी कहा कि इनोवेशन, द कम्युनिटी इनोवेशन रियली नीड टू बी प्लेस विद द न्यू साइंस नॉलेज। ये का अगर एक अपॉर्चुनिटी हम डेवलप करें कि हमारे सभी साथी, देखिए कोर के अंदर भी या कहीं पे भी आपने ये बात नोट की होगी, उनके हमेशा 90% टाइम में वट एवर दे डू इज एन इनोवेशन, वो उनकी एग्रोक्लाइमेटिक जोन के भीतर है। और ये जो हमारे और साथी जो है, इन दोनों का जो आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसमें एक जो बड़ा असर आएगा कि जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं, साइंस पार्टनर, वो स्केल डाउन आप कस्टमाइजेशन जैसे इश्यूज जो कि प्राय नहीं होते, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपके कमर्शियल फार्मर है उसको उठा के ले गए, मार्जिनलाइज फार्मर, स्मॉल फार्मर की रीच नहीं होती, तो उसके लिए शायद एक फैसिलिटेशन का आपने जो काम करने की शुरुआत कर रहे हैं कि भाई उसके लिए भी अवेलेबल हो। लास्ट टाइम में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो एक बड़ा इंक्यूबेटर था उसको हम छोटे साइज में कैसे ले जाएं, तो हमारा टारगेट एज ए सप्लीमेंट्री इनकम टू स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर, ये दोनों बातों को रखेंगे तो हम उन लिमिटेशन को पहले ही दर्जे में खत्म कर देंगे, और जो आज तक शायद बहुत ज्यादा हुई नहीं है, आई है लेकिन हमने उन पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रयोग का हो रहा है, एक बातचीत का जो बहस आपने एक शुरू की है, इसका आने वाले समय में एक बड़ा असर पड़ेगा। और जितने साथी यहाँ पे दोनों तरह के साथी सुनते हैं, दोनों की सिविल सोसाइटी को नए नॉलेज का पता है, और जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं
उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न उनको आगे आने वाली दिशा बता रहे हैं कि वे के डायरेक्शन क्या होना चाहिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उनका उसके अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर जोशी। The experience of yours, like from the ground, is always invaluable to us. Just one point, like what you have raised, that generally, like the way our technology has been developed, and technology, whenever we think like this, initially the technology cost will be high, and that's the nature of the technology. But what is the role of the government is what I believe is that how the benefit of that should be taken to the maximum number of the disadvantage of the society. और ये करने के लिए इंडिविजुअली टारगेट करने से नहीं होगा। ये जैसे हमारे जो एमएसएमई में जो एमएसएमई सेक्टर्स में जहाँ क्लस्टर्स होता है वहाँ नॉलेज इन्फ्यूजन इंडिविजुअली करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी लाएंगे उनकी कॉस्ट होगा, कोई नया अडॉप्ट नहीं करना चाहता है। सोसाइटी के केस में भी हुई है। तो जो हमारे जो विचार आ रहे हैं कि वी कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ ए लोकल लेवल इनोवेशन क्लस्टर, और हमारे जो कोर सपोर्ट ग्रुप्स की जो साइंस एंड सोसाइटी के बीच जो इस्तेमाल करके, मुझे तो लगता है कि कोर सपोर्ट ग्रुप्स को जो एवोल्यूशन पाथवे में जाना है, जो अभी वो लोग जो उनकी जो लाइवलीहुड सिस्टम जो कम्युनिटी को उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है, उनकी जो वीकेस्ट पॉइंट और को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट का एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए जो नए टेक्नोलॉजी की इन्फ्यूजन्स कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ एन लोकल लेवल इनोवेशन सेंटर्स, जिसपे हम ये जो जैसे जो नए टेक्नोलॉजी हमने देखा है, जैसे गोल्ड व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज, इससे क्या होगा, उनकी जो प्रोडक्शंस की एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा, एक क्वालिटी आएंगे, तभी उनका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, तब वो हायर वैल्यू चेन में आएंगे। तो ये प्रोसेस करने के लिए हमारे केवीकेस है, बट ये केवीके के साथ भी मिलके ये हमारे जो एनजीओज है ऑलरेडी काम करता है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से इफ वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ एन mechanisms, probably that will strengthen the existing systems. तो इसके ऊपर कोई किसी का कोई विचार है? I think we have got Ketaki ji, do you have any views on this? धन्यवाद, और सबका भी अभिनंदन है जिन्होंने भी प्रेजेंट किया। I was also listening, though I was on mute. तो मुझे मेरे दो ही शब्द में मैं विचार डालूंगी। एक तो आज जो ये 2 दिन हम लोग जो ये संगोष्ठी या वेब क्लिनिक के सेशंस हमारे हुए हैं, वहाँ पे देयर इज अ पोटेंशियल with animal husbandry sector and the aquaculture sector for the solace or the another alternative for the farmers. So we should utilize that, and I understand that every state के पास में भी अलग-अलग policies होती है. So I am more concerned also about the endangered species. Like when we were working in NER, तो वहाँ पे जो एक पेंगुआ नाम का एक बड़ा सुंदर सा सिल्वर कलर का, and it seems it is a very tasty fish, that is what the resident says. So वो endangered है. So इस तरह से जो वाइल्ड वैरायटीज जो आती है, so ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके क्या हम इसे कर सकते हैं? I am thinking that it is a well thought channel through our core group. They can act as a receiver end and their field level का इससे हम लोग उसको कर सकते हैं. Maybe any policy thing or any mechanism thing, PSA office, BST and आपके सहयोग से हम लोग कुछ बना सकते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं सबको बधाई भी देती हूँ कि इसको हम लोग किस तरह से अडॉप्ट किया जाए. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट दी कोर ग्रुप टू से कि व्हाट दे वांट एंड कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू. ओवर. Any one of you, you wants to come, like whoever is, present here wants to comment on this, what, in general, what you have seen today, what are the challenges, because I see many challenges. My first challenge is to bring
the knowledge organizations to this type of discussions, and definitely I'm confident that we will overcome it, because many knowledge organizations are here also, and I believe like its numbers will increase, and for that we have to create that type of awareness as well as a value, like so that we can bring. Anyone has any comments, like from who are present here, please? I don't know, like whether my our colleagues from FICCI are here. Either Rubab or Sanjeev, are you here? Rubab? Yes. Good evening, sir. Yes. Good evening. Yeah, Rubab, like you are seeing it now. Almost we are now on the 6th day on the 3rd week. What's your feeling? Yes, sir. Overwhelming, to say the least. I think I've been waiting for this opportunity on the 6th, which I have to talk more about Milap. But I must congratulate this entire platform which has been created. And I think you've pointed out a few times today about knowledge institutions. That's a gap, and they're creating more awareness amongst them to utilize this platform and contribute to this platform is something which is missing. But I think the awareness is spreading, sir, and they're more keen. This platform is getting that necessary traction. What presentations I saw today, especially the RMCU one which was done, and then Mr. Prateek Datta as well, and even Mohit Kumar. I think these are all very relevant, and I think what Dr. Joshi also mentioned, livelihood definitely is one of the areas which we want to enhance, but alternate means of livelihood will also come out of this initiative, and I think I'm looking forward to that. And when we talk about MSME and economics on the 6th, I think that is one of the areas we would like to touch upon. Alternate means of livelihood, optimizing the human resource, I think is very important at the farmer level. An activity which usually needs 3 or 4 people is being undertaken by 5 or 6, and I think that is where the optimization is lacking. And I think through alternate means of livelihood to those set of people will definitely enhance the earnings, the money which is saved by the farmer. So I think we are really सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं. I think ये बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू strong message जा रहा है, and I must compliment you and KTK ji also for this opportunity for letting FICCI be a part of this. Thank you so much, sir. Sanjeev, do you have any point? Sanjeev, unmute कर. Sir, yes, sir. Thank you so much, sir. बहुत धन्यवाद आपने ये मौका दिया. In fact, most of the things have been covered by Rubab. So I would only say that कि सर ये सच में एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड PSA ऑफिस का है, और ये बिल्कुल डिफरेंट इसमें अप्रोच है कि नॉर्मली होता है कि टेक्नोलॉजीज को भी ट्राई एंड फाइंड आउट सम लाइक कहाँ पे ये फिट इन होगा, बट यहाँ पे हम लोग वाइस वर्सा काम कर रहे हैं. पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग फॉर सोल्यूशन. So this is a wonderful initiative, और सच में ये एक सेतु का काम करेगा फॉर आत्मनिर्भर भारत, and we are fully committed with you and for this cause, sir. We are with you, sir. Thank you, sir. Yeah. Anyone else? Please, please, come and pour your, open your heart. Then only we will learn. None of us know anything ultimate. All of us learn together. So please, if you have any point, open up your, mind and, give your views so that, we can learn together and, grow together. It's for the country. Anyone? Rahul, do you have any views? Rahul, my co-coordinator. Rahul? Thank you so much, sir. Thank you, both, for obviously for today's amazing session, which you managed, and for your kind comments. I entirely agree with all the points that have been raised so far. As you know, sir, and as many of the participants and attendees today may be aware, the Agni mission from the Office of PSA seeks to capture the value of emerging technology. So where a technology from a startup or from a lab is deployment ready,
we advance that to deployments by interacting with industry and with non-profits and with government. What was particularly valuable today were the number of discussions that came up, not just on deployment models, that came up with the aquaculture examples and indeed with the dairy examples, but there were also some points that were raised about how to drive actual uptake in the field. That's always the toughest part, both the first round of uptake and scaling. So once you've gotten one dairy farmer or one aquaculturist to pick up a technology, how do we then get a wider network to emulate that, especially when operating conditions are as diverse in the field in India as they are, as we all know. And in that respect, the NGOs that are gathered here today are absolutely essential. They manage networks of community change agents. They manage networks of collective action groups, and they're absolutely fundamental to this. To being able to drive scaling and to being able to drive early adoption. So we look forward very much to learning more from many of the organizations that have come here today. As always, we look forward to collaborating with DST, with SEED, and seeing whether we can converge our small efforts with the tremendous work that SEED has done. And we look forward very much, most of all, to mention the point that you just raised, sir, to learning from everyone here when we interact again beyond this session. India is complicated enough in the field that no one ever knows everything. So we approach that with great humility, and we look forward very much to learning from all of you. Thank you so much, Datta sir. Much appreciated. Thank you. Thank you. Any comments from the presenters today? Because many of these presenters we are interacting for like many first. How do you find this is an don't say only positive things, please say negative things also. If you feel what is the problem, what is the problem you feel maybe government is unreachable, yeah, that is a problem, but really any one of you who has presented this time, can you, if you can bring this the points, because that would have been learning experience for us. Yes, Mishraji, yeah. सर नॉट अ नेगेटिव थिंग, मेरा सिर्फ एक ही था कि ये इस तरह के सेशंस जो है अगर इसको हम YouTube और दूसरे चैनल्स पे भी अवेलेबल कर देते हैं तो काफी लोग इसका यूज कर पाएंगे। और हाल ही में मैंने एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी ICR इंस्टीट्यूशंस ने डेवलप करके रखे हुए हैं, जो कल भी सर बता रहे थे, इवन एग्री इनोवेट पे भी है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फिश हाइड्रोसैलेट का, जो कि फिश वेस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं फर्टिलाइजर के लिए और काफी हाई वैल्यू फर्टिलाइजर बनता है वो हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर के लिए। इट्स ए वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, इसे ही तीन फिशरी इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया हुआ है। लेकिन जब इसको हम स्केल की बात करते हैं फार्मर की, तो फिर वहां IP राइट्स लाइसेंसिंग आ जाती है, 2.5 लाख रुपीस का फीस, 3 लाख का फीस, जो एक सिंपल फार्मर नहीं दे सकता है। तो क्या इतने बड़े फोरम DST के साथ में हम एक प्रोसेस बना सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी ICR के साथ आई हुई है उसको कम से कम पायलट के लिए फॉर 1 ईयर 2 ईयर हम दें एंटरप्रेन्योर ग्रुप को, एजेंसी को। अगर वो उससे सक्सेसफुली ले जाते हैं तो देन देयर इज ए फी रिवेन्यू का वापसी का हो, अदरवाइज वो एक टेस्टिंग के लिए है कि एक्सपीरियंस के लिए। ये एक मेरा सजेशन था कि बहुत सी टेक्नोलॉजी आ जाती है लेकिन फार्मर्स तक हम उसको कैसे लेके जाएं अगर हर एक चीज के लिए हमें फीस देनी पड़े। It's a very valid point, Mishraji, because this is the IP issue is a new experience for the country. Sometimes we get overboard because people who are doing IP fault penalty, they we must get the IP. But generally IP has a value when there is a level playing field. The question is whether in this country we have level playing field. So this is a very good point, which we need to consider, because as a part of my other responsibility, I look after the patent facilitation centers and the patent in TIFAC as well as facilitations units in the states. But
we have to really look into that socially relevant technology. Should they have a separate patent regime, so this needs to be discussed and developed for our in the context. If someone in a grassroots level, innovators is developing a technology, they should also get the benefit of the the patenting. But the majority of the community should not lose the advantage of that. So that needs to be looked into, and definitely that's a very important point what you brought. Thank you, sir. Hello, sir. Can I join in? I'm just thinking. Yes, Dr. Mishra, Dr. Mishra mentioned about making this available on the social media channels, platforms. I just would like to add here, sir, that every day the web clinic they are all being live telecast on social media platform of Vigyan Prasar and ISTI portal, on Facebook as well as on the YouTube channel of Vigyan Prasar, and all the recordings are being made available on the ISTI portal. If you go to the web clinic page, there you will see the past recordings of all these events, of all these deliberations. So you can share it as well as you can listen later on. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. I think just before we, say goodbye to today and at the third week of our this journey, there is a questions from Mr. Rubab Sud to Mr. Purwal that are you looking for the possibility of making your solutions more affordable for end users? Any financing schemes available through linkages with the financial institutions? So this is the offer. Probably like with the FICCI and this type of producers like the project Move, we can work. There is a question from Dr. Ramalakshmi Datta that will the community present the Bharat Pratima Islands? Dr. Datta, yes, definitely. Dr. Datta, are you here? Yeah. Yeah, please. Yeah, please. Okay. I'll just request. For the all the presenters here, like who are seeing here, who has left, who may be with us through Facebook and the YouTube, we have a really like a gap with the real beneficiaries, that is the community. So here, Dr. Ramalakshmi Datta from PIB could motivate community representative from Bharat Pratima Island. He is here, and Dr. Datta, please introduce him and please his view. Yeah. গুণগত মান কম, সেজন্যই আমরা কম দামে বিক্রি করতাম। বর্তমানে আমরা নিমপিট রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভিভের পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আমরা যে মধুটা কালেকশন করছি তার গুণগত মান খুবই ভালো এবং দামও অনেক বেশি। সে কারণের জন্য আমাদের পারিবারিক যে আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল কিছুটা সচ্ছলতা এসছে, এবং আমি বর্তমান এই সোসাইটির সদস্য এবং সুবিধা আমরা সোসাইটি থেকে পেয়েছি এবং আগামী দিনে পাবো এই আশা রাখছি। নমস্কার। আপনার নামটা যদি বলেন, আপনার নামটা? মাইতি। আপনার নামটা? আপনার নাম? বাদল মাইতি। পাথর প্রতিমা। So just since he spoke in my mother tongue, I can just translate it for the advantage of others. So Madhav Maitri ji ne jo bataya Bharat Pratima se आए हुए कि he is a traditional the honey gatherer, but he said that without technology, when he used to go into the jungle, the quality of the honey was low. So as a result, that the return was low. But with the PIB's, the help and the technology interventions, जो अभी जो हनी वो मिलते हैं,
So that is quality is better. So as a result, he is getting a better return, and that has resulted into a better conditions of his family, the economical conditions, and they are a part of a cooperative group, and and he says that he will remain a part of these cooperative groups in order to get the technological beneficiary. So this is an example, like how really the ground level beneficiaries can talk, and we have to find it out that really how their benefit we can institutionalize with the with this the S&T input. We will work together. I think from the seed side and the other PS office side. Like other than that, also all of us, like what the stakeholders will work together. And I think. Thank you, Dr. Datta. Thank you, Dr. Datta, for to bringing Mr. Maiti and when he can speak to us, and I really thank you. And I think I think what I'm thinking with all of our core support groups, and not only core support groups, other NGOs, we can have sessions where you can really bring the the community representatives. Let us talk to them, and the virtual platform, they bring this advantage and the advantage of our wonderful diversity. Like he may speak in a different language, in different culture, different livelihood systems, but their problem needs our science and technology to align to that to. If we can do that, that will be this the main pillar of our Atma Nirbhar Bharat, which any type of an physical infrastructure, because any physical infrastructure development at the remotest of the place only bring the outside contractors here, but their own the knowledge infrastructure building will give them that Atma Vishwas, which will make an Atma Nirbharata a natural process rather not done an outside infused process which cannot sustain. So any type of an outside interventions, sustenance is a challenge which only the knowledge infusions process and working together with the community can give them that Atma Vishwas, so that this Atma Nirbharata comes as a not natural and the novel process. So if you don't have any any more comments, I thank all of you. Like at the end, I see that 52 people are with us to be with us, and I think as our Secretary Saab says that the challenge before India is of scale. Every time we have to do 10 and 100, and with that spirit, we'll definitely take in our we'll try to bring it this in number of X. And thank you all, and have a good very good evening, and have a very nice long weekend, because tomorrow government holiday, so they'll have a nice weekend. And next week we will come on 5th and we'll come back on 5th and 6th November with the economy and the MSME sectors. So that will be the our travel of Atma Nirbhar Bharat, converting the knowledge to the micro entrepreneurships. So again, I thank all of you. I thank all the partners from Dr. Bapat, Dr. Kinkini, Rahul, and Rubab, and Sanjeev, Dr. Anil Joshi to be always be with us, and to all of my thank you, and good afternoon. Namaste. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Datta. Thank you. Thank you.